holding for deployment. Take this time to warm up. Dropping into the air. Moving. Enough training. Now we face the enemy for real. Get to the safe zone. Hunt contract here. Yeah, buddy, let's just fight and get it over with, huh? Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Eliminate all targets. Thank you. I think more people landed. Shit, man. This is the gulag. Bitch. You'll have to fight to earn redeployment. The nuke skin, fuck. Nice. क्या फोन नंबर डाला नाम की जगह लाउडे Going back makes no sense. Hunt contract here. Oh, fuck it. Hunt contract here. There's fighting happening here. चोरी करते हैं. Stronghold located. Targets are marked on your attack map. Yeah, buddy. Let's be friendly, yeah?
पुलिस ने मारी थी। नहीं यार, The enemy took that one, but we will ईयरफोन लेना finish the पड़ेगा। job. Warm up while you can. Puppies We on will them? deploy soon. Or bunnies? Enemies on What was that? Up the fire! Stun incoming! enemy soldier incoming. Practice is over. The real fight begins now. Tunis, bye bye. Get ready to jump! 5 seconds! Set a drop point for your squad, soldier. Sorry, I don't like that spot. Yeah, man, I got Targets are up. Get I to work. on there. Positive ID on the bounty target. Eliminate them. Hostiles dropping into the area. Watch the delicious. skies. Enemy in the area! One down. Copy that. More strike inbound. Squad mates is in the gulag now. If they survive, they will deploy. Where are they? Get shots missed. Oh no, I lost.
Let's go, Tunis. The last two standing will leave it. Kill for your principle. Allez, rouge. Tossing smoke grenade! Frag out! Pussies aren't pushing, man. Don't fire. What do you mean don't fire? Oh, bitch, you're throwing grenades and asking me not to fire, huh? Okay. Taking fire! Grenade! Eat that, boy. Both of them there, hiding like pussies. Fuck! No! Where's your girlfriend, huh? Others on your side. We are sending you back to the front line. Hunt contract here. Okay. I don't like this area either, man. Bounty targets are up. Take them down. Move to the safe zone. Hostile UAV in the area. UAV on. Enemy UAV overhead. Enemy UAV on. We have to rotate. Get that car. There's a full team here. Enemy movement! Oh, they're waiting for us. Fuck. Should get that car. Moving to my mark. Boy, you're running towards them, man. आ रहा हूँ पुल Squad mates have मर गए आ रहा हूँ redeployment. पुश ही कर रहा हूँ मैं, चलो देखा जाएगा Primary objective complete. All targets eliminated. Where are you guys? Where are the enemies, bro? Hey, go there. What? On the train. What are you? The man is going out of zone. Runs the area! Copy that! He's on the train. Yeah, he has to come out, huh? Ah, come on. Eyes out! The sector's hot! Hold on. Bitches? Push ही खेल रहा है push ऐसे बाय मार्क बाय चले बहुत चाहिए ये लोग Loot here! Gas is closing in. Relocating the safe zone. Look around! All stations. Escape brake is active. كان في حدنا كان
spotted. I'm gonna do it. Got a loadout drop inbound. Heads up. I'll go to load out. Break is active. God. Okay. Enemy UAV active. Gas is inbound. Enemy dropping into the AO. They tagged me! يا حمار انا توني جاي يجبرني دروعه. Some of your team ده is لا outside يعني the صح؟ safe zone. Copy that. Late bitch. يا حمار انا على واحد القلب. No hit. Yeah, money, fuck. Need mid-cal rounds! هنا بسرعة هنا نص راح. عندي لوداوت بالله. قوم روح هنا كله لي. Brother, I need ammo. You have ammo? Enemy here! बंदा मरा पड़ा fuck. Oh bye. واحد من وجودنا ثاني ثاني بقى من وجودنا. دقيقة. وين درع مالي صح؟ Target area marked! Strike on the way. चूतिया गेम है क्या? درمي عليه. يا هذه شوي بس مع الشر مو مشكلة. أبوي كويس كثير أبوي. Stun grenade out! درع ترى جاي. الله جاني. Inbound. Marking new safe zone. Ah, This तेरी. one's down. Made the top 25. Nicely done. SMG नहीं होता ना, यही होता सारा सीन. يلا
Check weapons and gear. We're holding for deployment. Enemy soldier incoming. Get me a fucking soldier. Moving. Hostile in the area. Watch the skies. ये P90 का हिप्पर तो बहुत बढ़िया है। तो बीसी वाले अच्छे Training is होते over. हैं, बाकी बहुत बेकार होते हैं। वो ट्यूनिंग हटा देना चाहिए, साल को में इतना कॉम्प्लिकेट किया। क्या? ट्यूनिंग जो है You got 5 seconds. Good luck down there. बाउंटी हो गया। All right, soldiers. Mark a drop point for your squad. Not your business. Enemy dropping into the AO. हाँ लोग साथ ही Yeah. Ain't seen one. Primary objective is to eliminate all targets. काउंटर उठा लो। पहले की Objective is to eliminate all bounty targets. यार अच्छी करनी तो है ही नहीं। हुराकान मिली है, हुराकान। हाँ बस लोग लैंड किया। आसपास लोग लैंड किए क्या? मेरे को तो नहीं आया, मेरे को किसी ने नहीं लगा। 2% किए थे। रिकॉन चला रहा है कोई, तो तू चला रहा है। तेरा बंदा लैंड कर रहा है अभी। दूर है मेरे से। ब्रोकन अबे कैसे मिल गया यार ये? Your squad mate was sent to the gulag. They'll fight for a chance अकेला to था? deploy. हाँ अकेला है उसके ऊपर। You buddy, you killed my friend, bro. Stun grenade. छत पे उसका बढ़िया हेडग्लिच है, मेरे पास है। यार कुछ भी चल रहा है। Now where are the rest of you? Moving. Enemy movement. Enemy here. लगा ही था यार, उसको मारो पहले। पीछे से फिर इसकी पिटाई हो रही है, इसको बचाने आना पड़ता। फक मैन। Soldiers, you failed in life, but I offer you redemption in death. Kill for full intent, unless I send you to God and he kills you for my entertainment. क्या अंदर गए पाउस का? अबे मेरा टीममेट तो बहुत निकला ब्रो, और दो स्वेट है मेरे सामने। तो बैकआउट ही कर लेते हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाए। वाको का क्या सीन है? पूछ
पूछता हूँ, रुक एक सेकंड, मैं घर पे भी कॉल कर लेता हूँ, 2 मिनट। दो सेकंड। क्या हुआ? कोई आ रहा है क्या? बोले आ रहा है। 2 सेकंड में लाजपन का एक वो बना रहा हूँ थोड़ा। हाँ मेरा भी तो है ना वो, एक क्या कहते हैं उसको, WG रैंक देख के बनाते हैं। ये लोग बैटल राइफल में सारा स्कोप नहीं लगाते। ऑयल फैक्ट्री स्टॉक डाउन 4 है। ट्राई करके देखता हूँ। वाले कूली नहीं आ रहा। एक सेकंड। एक ही सेकंड ना। हेलो हेलो। हाँ एक सेकंड मैं लोड आउट बना रहा था। अरे फक। X12 का लोड आउट पता है तेरे को? X12 ब्रो नॉट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। वैजनर 9K का बना रहा हूँ, अगर तेरे को बनाना है तो। तुमको ये पर्क पैकेज क्या रखता है? वेपन स्पेशलिस्ट। मैं तो कमांडर रखता हूँ। 2 सेकंड यार, ये तो अनलॉक्ड नहीं है। तो 5.5 कौन सी गन है? मैं बना रहा हूँ। मेरा तो बन गया।
मजाक है ये तो भी मतलब लगा दूं? दो भी बंदे को हाँ लगा ले बकवास है मेरे तो लोड आउट ही नहीं बन पाता है ये भी यार को क्यों करना पड़ेगा मेरे को मैक्स आउट रेंज नहीं होगा दिखे नहीं मेरे को बीच में कॉल आ जाता है क्या नाम है Use this time to practice. We will be deploying soon. Enemy soldier incoming. ठीक है बंदर Hostiles dropping into the area. Watch the skies. मैं तो आधे घंटे में खाना खाने लगा ब्रो जब बाहर आता हूँ फिर Feel free to thank me later. Enemy dropping into the AO. तो कैसे चलाते हैं भाई Stand by for deployment to the war zone. अरे हाँ ये तो बॉट था भाई मैं स्ट्रेट डाइव मार रहा हूँ anyone Hunt the enemy down. क्या Bounty targets identified. You are clear to engage. अरे उधर चलो वी एस वाले पुश करते हैं मेरे को सिर्फ एक एसएमजी चाहिए यार मेरा फॉर सम रीजन You're being tracked by an enemy squad. ये किसने लूटा? Evade and survive. आसपास बंदे गिरे थे क्या एक्चुअली है मेरे पास
कर दे। मैंने उठा लिया। कहाँ है? ये ले उससे लेने से पहले तुरंत उठाओ हैं। पावर स्कार तो नहीं मिलना चाहिए। तू तो दे भी देगा, तू ऐसा बंदा है। सारे दे देना चाहिए था। क्या मिलेगा तेरे को उसको देके? गेम जिताएगा वे। कोई नहीं, नेक्स्ट चीज उसको दे दियो, कैश वैश। Armor pouch marked. SMG तो मीलों तक नहीं मिलेगी मुझे लग रहा है। चलो अगर जाना जाते हैं। SMG रेयर का तो ये भाई छत पे है। चले इसको होल्ड करेंगे हम। तेरे पीछे कहाँ पे होल्ड करना बताओ मैप देख के। वो तो जरूरी नहीं है हमारी तरफ रोटेट करेगा। हमारे लिए ले रहेगा ये हफ्ते को एक पोजीशन लेना पड़ेगा जहाँ से वो निकलेंगे ना। तो ये यहाँ पे चलते हैं मैंने मार्क लगाया है। अनलेस वहाँ पे और कोई भी हो ऑलरेडी। मुझे पड़ी पीछे ले ऐसे ही बहुत है भाई, तो है नहीं आसपास। मेरे पे बाउंटी है हो सकता कि उन्होंने उठाई हो। मेरे पास बता दियो। पॉप कर Our UAV is orbiting the area. और कोई नहीं आसपास। Be advised, यहाँ पे बंदे हैं। your team is outside the safe zone. मोस्ट वांटेड भी हो गया वो। कौन ये साला? एक ही पहाड़ के ऊपर बंदा मेरे पे लैंड करेगा क्या? Moving. ये Enemy लैंड कर visual. रहा है। हमें टीम होती है। जा रहा हूँ उसी तरफ। डैम मैन सेमेटेरी नॉट गुड लक। उसको समझ में आ गया। मैंने फेंका था। तूने फेंका था? अच्छा इधर ही है। एक्स्ट्रा पोस्टर्स आ रहे हैं। यार हाँ इधर ही कहीं है। कमरे के अंदर है। अरे यार बहुत जल्दी होती है तो कर लेगी। Mierda, beat some small cow. तो दोस्त का कोई आइडिया नहीं। आ गया हम पे। फिर आ रहे हैं। Time's up. Contract failed. वन शॉट है पे यार। Keep the cooldown. Buy big करम kills. Kill to escape. Die. खक्करम खत्म नहीं कर देते हैं। बाबा कर दो। ये पड़े। ओह नो ये बहुत बैड शॉट्स। Get blood on your hands. My dog will have yours on him. हे आओ। Interesting. सैंड छोड़। There's no one left to fight. भाई साहब Stand by for redeployment. मेरा टीममेट ने बचा लिया मेरे को। Gas is closing. Get to the new safe zone. मैं लूट पे जा रहा हूँ। सेफ है ना? बंदे जैसे हम आए थे वैसे वो एक और टीम हमारी होगी जो हमारी पुरानी बाउंटी थी। अबे क्या बकचोदी है भाई। बंदे आ गए। अरे यार मेरे को तो लूट तक आने नहीं दिया। दूर गया वो।
अटक गया मारो ना। मारो मारो, मेरे पास कुछ नहीं है मारने का। अरे यार दो लोग हैं बाहर। Your squad mate घुस गए। survived. हाँ बाहर ही है, एक सेमेट्री की तरफ से आ रहा है। अरे तेल भाई, पावर स्कार कुछ तो कर। Going to the AO. मैं तो जा रहा हूँ। क्या सीखने कर रहा हूँ? मैं चूतिया है यार, ये बता है। भाई पे कर सकता है फिर, भाई पे फाइट ही हुई है। दो भाई हैं एक्चुअली। Some good look here. You got gas moving in. बढ़िया। रोड पे आना है क्या? मैं कोशिश करूँगा पर देखते हैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं। थोड़ी देर हवा में रुक रहा हूँ मैं। Advise you move to the safe zone now. ऊपर से देख के बता कौन सा सेफ लग रहा है। मिड वाला तो सेफ नहीं है 100%। लेफ्ट वाला हो सकता है बट दैट इज ऑल्सो हाईली अनलाइकली, क्योंकि जेल बहुत बड़ा है। मेरे ऊपर आएगा। तेरा नॉट टू फार अवे। देख रहा हूँ। नहीं बनने यहाँ पर। ये रहा लाइफ वेट ले ओपन से भाग रहा है। मार क्यों नहीं हो रहा यार? मेरे पास गन कुछ नहीं है ब्रो। कुछ नहीं है। और सीलिंग की वो चला गया है। ओ भाई नहीं, घर में बैठा है भाई। कहाँ बैठे? तेरे घर में ऊपर वाले फ्लोर पे। बढ़िया स्नाइप मारा उसने। और फुल निंजा। नीचे कूदा शायद वो, मेरी बॉडी पे गया होगा। आएगा से ऊपर आएगा वो। चाकू घोप दिया गले में। मेरे को तो लग रहा है मैं ही मरूंगा। स्पॉट कर लिया तेरे को, फिर तेरा क्या ओवर है। सरप्राइज करना पड़ेगा उसको। यहाँ से स्नाइप कर रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है कि कहीं चला गया और वही स्नाइप कर रहा है। सामने लोड आउट पड़ा है लेकिन सो क्लोज येट सो फार। कहाँ पे है लोड आउट? ये तेरे सामने ट्रैक्स पे वहाँ पे तो जाऊँगा, मर जाऊँगा। थोड़ा वेट करता हूँ। और लेफ्ट पे खिड़की पे हो, Gas is moving in. सेकंड फ्लोर खिड़की पे New लेफ्ट। safe zone located. दे जाऊँगे उसमें। SMG marked. लेफ्ट वाली खिड़की से मार रहा था अभी। वहीं पे है बंदे का, वही उसी की तरफ जा रहा है। इसी घर के अंदर है। तो लग नहीं रहा वो यहाँ पे। क्रॉस कर रहे होंगे फिर। तेरे लेफ्ट पे ही है। हाँ तो सुन लिया होगा प्रॉब्ली। बढ़िया। अच्छा क्या एक लेफ्ट पे तेरे पीछे जा रहा है। क्या अपने आप हुआ यार। 25 remain. चाकू तो नहीं मेरे लगती उस पे। Failure is a white feature. अरे मैं ऊपर क्लाइंब कर रहा था ना, मेरा राइट रास्ते नीचे स्पेंड प्रेस हो गया। What were you saying? You joined my Discord or something? No, right? Maybe.
तेरी लॉबी में था ये। Maybe. क्या हाल है? Yo, what's up, man? Oh, maybe Ready for SNL. you're getting it from my home. Yeah, like an echo from your machine. Still getting an echo. Let me see. Nice. It is still there. It's a little lesser now. It's still there. That's all good. It's fine. It's much lesser now. I can deal with it now. मैं कल रात को 3 बजे तक जगा हुआ था वर्किंग ऑन दैट सर्वर. मतलब अभी ये हुआ है कि उस पे पायरेसी कर सकता हूँ मैं बिना वीपीएन का झंझट करे. वो परमानेंटली टॉरेंट्स विल गो थ्रू वीपीएन. क्या बात है? व्हाट यू सेइंग आपको? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो. अभी echo है. हाँ, काफी prominent echo है. अब गायब हो गई. नहीं, never mind. Spoke too soon. ये अभी नहीं आ रहा. हाँ, बीच में intermittently आ रही है. बहन जब the game is fucked man. Every single day I say that. Why do we play it? तो आता हाँ. Lobby dark R. अरे बोल रहा अरे. ये ब्रश करके आता हूँ मैं. इसमें एक्स्ट्रा चले हो. मैं भी खाने जा रहा हूँ. तो लॉबी टाइम में ही हो Holding जाएगा. for deployment. Take this time. हेलो 2 मिनट करना होता है ब्रश. 40 सेकंड नहीं. तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है. वो इलेक्ट्रिक वाला है, वो 2 मिनट ही चलता है. और भी एक दोस्त बना रहा है चैट में. नहीं मैं तो चाहता कि सब जाए आके पिट के मर जाए यहीं पर. Hostile dropping into the area. Watch the skies. वो अभी आ रहा है. मिला है दी हैंड बावली गैंड. बावली गांड. कौन बावली गांड? Deploy to the war zone. चढ़ के अच्छा. फ्यूजन स्पॉट पर बाय नहीं है आपने. सब इंडियन आए थे रमन ब्रीथ वगैरह बोलने चालू कर दिए. 500 FPS पे रमन ब्रीथ. फ्लेक्स कर रहा है. All right, 500 FPS पे भी कर सकता है. 4090 पे भी नहीं होगा. हाँ जल्दी बता. avoid the gas. Get to the safe zone. तर्राक. ना 2 outside the zone bro. तो अपने एरिया में चलते चलो. Solid LZ here. Let's drop. जाया जाना क्या जाया. ये आवाज आ रही है. आ रही है. अरे Echo है. नहीं है को तो नहीं यार. बिल्कुल भी नहीं है. 80 में रखा है थ्रेशोल्ड. सब बिल्कुल परफेक्ट है. ट्रेन पे हरा दिन के आ रहा है. मैं भी ट्रेन पे आऊंगा. You're clear to engage all targets. हम मार रहा किसको मार रहा.
मैं उतर गया. Okay, I'm back, boys. I am back. तुम लोग तो हैं चुदाए नहीं. कैसे बात हो यार, बाय बाय नहीं है. Waka, are you gonna cross the canal? No, let's stay here. Why are we going there? What is what? Okay. आ रहा हूँ. We located high-value equipment in enemy containers. Move in and secure that equipment. Is there a buy near us? एक तो निकला. क्या ना? एयरपोर्ट जा सकते हैं. I'm cool with that. गाड़ी तो रखी है. भाई इस पूरे घर में कुछ नहीं था. 2 फ्लोर्स कुछ नहीं. और गॉर्जियस गाड़ी पे. कहाँ जाना? एयरपोर्ट. चलो. गेम्स के Let's hit this buy. आजा गोली. पूरा हो गया. ऑर्डर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं गाड़ी. तो एक ही जगह पे है ना. मेरे को कॉल आ रहा है यार. मैं बैठ रहा हूँ इसमें. मेरे को घर से कॉल आ रहा है. AFK में तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी. एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे. उतर जाओ. चले जाऊंगा. अबे फक, मैं कूद गया गलती से. One safe down. 2 to go. यही बैठना पूरी गेम. Positive ID on multiple strongholds. वो भी कर सकते Locations हैं. are marked on your attack map. Closest stronghold is Al Sharif Pass. You're losing ओह, ground. यहाँ पे भी एक बना. Hostile UAV in the ये area. एक्टिवेट हो उसको गया. काम करना है. यहाँ पे लोग हैं. Enemy operators are tracking your location. I am being tracked. भाई मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था. Your मेरे team ऊपर made तो it to बंदे the आ safe गए. zone. One safe remaining. 2 बंदे आ गए. तुम दोनों इकट्ठे नहीं थे. पुश कर दिया. और They'll fight मैं for a chance गाड़ी to से गिर गया redeploy. था. फिर मैं इनकी तरफ जा रहा था. रास्ते में बंदों ने एंगेज कर दिया. बाकू की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है. बोल नहीं रहा है. I don't. No. I have to fucking scream again, man. I don't know. This game is just chalked, man. I अबे don't like यार this. ये फक. बोलन तेरा अभी तक PS पे डिस्कॉर्ड नहीं आया क्या? कब का आना था? I don't like this at all, man. It's just the game. बंदा किधर है वैसे? बंदा किधर है? मैं I got one. अच्छा तुम लोग मेरे उसमें नहीं है. बोला मैं क्या चल रहा है. मैं तो यहाँ से स्क्रैच भी नहीं पता कर पाया हूँ तब से ऊपर जाने के लिए. That last. How did Kohli die exactly? Your squad mates are redeploying. got him. Stand by. Got them. बताया नहीं कौन Fuck सी you, एरिया में था. asshole. Tracker. You've secured all content. चलो I'm back. Contract I'm complete. back. 2 बंदे फेले मैंने. मैं मरा था यहाँ पे. टेंशन मार क्यों नहीं हो रहा? हाँ यहाँ पे. Died in airport? Why were you coming to airport? Why didn't you tell me? I would have bloody picked you up or something. I did say that. फिर तभी तो मैं तुम्हारे पीछे था.
जब No, तुम you लोग गए थे तू गाड़ी में बैठा उसके बाद तू निकल गया तो I thought you were going back. आपका जाना I said I'm moving towards you, but चलो कुछ नहीं होता. I'm back now. They couldn't hold me. I was too क्या good for शॉट them. बताओ Fire station manager पूछा तेरे को safe. You guys wanna grab some guns from there? आ गया वापस. क्या सीन है? ये भी है. Trophy system activated. कोई नहीं मरा अभी तक. और खरीदने के पैसे नहीं. तो गाड़ी को ट्रॉफी नहीं लगता 884 से कितना है? वो बाई पे असली है क्या We have एयरपोर्ट वाले? 34. We have 32. Where are we going? We have 32. Okay. I'm asking you, do we have 32? नहीं भाई 18/7 कितना हो गया? 25 2 27 28 29 है अपने पास. वहीं पे बायबैक हुआ है. Let's hit this gas station. जहाँ पर पैसे मिलते हैं. कहाँ जा रहे हैं? I don't mind buying guns also, man. I don't mind. Yeah, I think buying that should be more economical, man. सिर्फ पर्क्स का ही देखना पैसे दे रहा है. उधर तो 100%. राइट वाला बाय I hate that buy. You don't even have a UAV. Oh wait, I have a UAV. I have a UAV. I have a UAV. एक पॉप करो. एक पॉप कर दी मैंने. जा रहा हूँ बाय पे आ रहा हूँ. पेंचो रास्ता कहाँ है? दीवार है. यहाँ पे है एक फुल टीम है यहाँ पे और यहाँ पे. बाइक के पास एक बंदा है. You've got gas एक inbound. और UAV खरीद सकते हो. ये लो पैसे ले लो मेरे. मैंने खरीद ली बहुत यहाँ पे बड़ी एक सोलो है इसको मारते हैं चलो. वो सोलो वाला दिख नहीं रहा है. I'm trying to spot him. ये तो दरवाजा खुला हुआ है. तो मार दिया. वो भैंचोद. मैं गया तो दरवाजा खुला हुआ है. तुमने बंदा फेल किया. तो अभी अच्छी आरपी के है. अंदर पीछे बहुत बंदे हैं भाई. थोड़े पैसे ऑटो की लाइन कराया उन्होंने वहाँ पे Friendly UAV on station. फुल टीम है. एक सोलो यहाँ पे. यहाँ पर बंदे ऐसे ही हैं. कराया वहाँ पे Cashier. मार पुश करते हैं. टावर की तरफ से जा रहा हूँ मैं Moving here. बिल्डिंग में भाई. Loadout drop headed your way. लोड आउट पे आ गया. अबे गन उठा ले. माँ के लोड़े. मेरे बॉट्स मार रहे हैं. लोड आउट्स. पहले दिन को मार रहे हैं ना हम. को मार रहे हैं bro, please. एक ये वाला घर है. स्टे ऑन ट्रैक एक ही गाड़ी है. UAV online. तीनों एक साथ हो गए अब. पुलिस आता लग रहा है अरे बॉट्स कौन है इंसान कौन है समझ में नहीं आ रहा. था मेमोराइजिंग. मेरे सामने ही थी ना. एक डाउन नहीं हुआ साला. ऊपर है वहीं पे हुआ. कौन शॉट है वो? क्या उनके बॉट से लड़ रहे हो. तीन ये थे. तो पागल है क्या बोली? Are you serious? ये ऊपर आ गया. दो पर है ना. बहुत बढ़िया बहुत. गांजी जरफिश. थैंक्स. लोड आउट किया किसी ने ध्यान रखा कहाँ पे था? हाँ इसीलिए रट रहा था मैं. एक यहाँ पे है. यूपी में एक यहाँ पे है. बहुत दूर है. तो मीडियम बैक अच्छा नॉइस. यहाँ से निकलो यार. बॉट परेशान कर देंगे. ये एरिया से निकलो. यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मेरे पास नहीं ना. मेरे पास एक स्पेयर मीडियम बैकपैक है. अरे साथ What's में your अलग दे दिया Could get an easy loadout from here. किधर है स्ट्रॉन्गहोल्ड? मैं I bots क्यों आ रहे हैं? see There are a lot of this bots one. here. So no, I'm just wondering why there are bots here. ये बैक हमने यूज किया था उसके पास मैं हेलीकॉप्टर लेके ऊपर से देखता हूँ कहीं दिख रहा है कि नहीं स्ट्रॉन्गहोल्ड. हमारा नेक्स्ट मूव क्या है? हम यहीं पे हैंग बैक कर रहे हैं नहीं जा रहे हैं
जाना तो चाहिए। Royal, I'm following war. Zone के He's center going में है। towards the. He's going towards the. Hilo, Hilo. hilo. After that. Oh no! बंदा Oh पकड़ा no! और किसको? Oh no! मैं हो जाऊंगा सिल्वर, कवर देना बस। मैं हो जाऊंगा सिल्वर, मेरे को कवर देना। एंगल होल्ड करो यार। क्या शिट, बहुत दूर हो रहे थे। पता नहीं कैसे जिंदा हूँ यार। हट। यहाँ पर है बंदा। I just saw him move towards there. ऊपर है, ऊपर है छत ब्रिज। हाँ वहाँ पे एंगेज लगी थी के साथ। मेरे फुल टीम है वो। ओ भाई बीम करे आ रहे हैं। इम्प्रेस। एक को डाउन करो तो बताना। ओ नो, स्नाइप मार दी। बस स्नाइपर नहीं है ब्रो। मेरे को स्नाइप मार दी इसने। Friendly precision airstrike inbound. I will have to crash this. एक लेफ्ट में और Our mortar strike inbound. बंदा और लैंड कर रहे हैं। यार फक। Hostile UAV in the area. तो मारने गया मैं। ऊपर You'll have to fight to earn मेरे को भी redeployment. मरवाओगे। एक और डाउन है वहाँ पर। बहुत बढ़िया। दोनों डाउन है। राइट जा रहा है बंदा, राइट जा रहा है। कहाँ पर है? देखो देखो। हाय हाय। Don't die, okay? If we get knocked, it'll be. There's no self revive on any of us. We are all three of us are separate. Why कोहली क्या कर रहा है कोहली? Coming towards you. डिस्को पोटेटो है। 0 plates. बहुत डैमेज है कोहली, वो राइट वाला। कोहली का कोच नहीं आ रहा है। I need munitions, man. I need. I don't have plates though. So I chased someone. फिनिशिंग गिराए हैं वो। प्लेट गिरा दोगे अगर एक्स्ट्रा तो बढ़िया होगा। मैंने आप आर्मर डाला हुआ है यहाँ पे। On your side. बढ़िया ब्रो, मेरा टीममेट नहीं कर रहा। आता हूँ ऊपर आके। फिनिशिंग नीचे यार। क्या सीन है, उनको मार दिया था। नहीं एक शॉट खत्म हुआ था उनमें से, दूसरा तो वहीं पे है जो I lost my high ground. Going back for buyback. While going back, this one on the left. ये कोहली का तो भी भूला है ना। नहीं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ गुलाब। यार पहले मैंने उठा ली। ये एमो बॉक्स, सॉरी प्लेट बॉक्स कैसे चढ़ते हो ऊपर? I need help. मेरे पास सिर्फ डीगल है भाई। कर दे Our UAV is orbiting इसके पास ही है तीन बंदे। Can't do Oh that. fuck, there are too many people. 30 बुलेट्स एंड डीगल। I have to. आ जाओ इस साइड रोटेट करना तो आ जाओ पीछे को। आ रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ। Head to the safe zone now. इनका हमारी तरफ आना है। गन दिखे तो बताना भाई। Next buy, I'll definitely get you. ये चॉपर भी बॉट नहीं है। भाई मैं तो गन ढूंढ रहा हूँ, मेरे को टाइम लगेगा कुछ भी करने में। बिल्डिंग के टॉप पे जा रहा हूँ मैं तो। I don't understand this place at all, man. I'm trying to get on top of something so we can focus over camping. ठीक है इसमें स्टेगेस होगा। हाँ ये रहा। कुछ नहीं है भाई इधर। गंदा बंदा बगल में कूद गया। आ गया। नीचे भी था तो डैमेज दिया है बस। Enemy precision airstrike. ऑपरेशन आ रही है। मेरे को फिर ब्रेक भी कर दिया। वाओ अच्छी टीम लगी है मेरे को। नीचे से Guys need plates. नहीं यार तोड़ दिया मेरे को। पास आ गया। एक गन यार चूतियों ने।
In your footsteps, they're right below us. तुम्हारी बगल वाली बिल्डिंग में है। Planting mine. तुम्हारी बिल्डिंग में आ गए शायद। Buyback का जब opportunity Planting claymore. Setting mine. क्या प्लान है? camp till the zone change. Car marked. Or we can do a contract so we can. अभी भी एक stronghold active है. मैंने पुश नहीं किया और Gas is closing in. Hello. Relocating the safe zone. अरे नीचे गिर गया। Fuck. वो तो राइट भाग गया पूरा। गाड़ी मार के आता पहले। तो कॉम्स नहीं आया ब्रो। Are you serious? मैं फॉलोइंग थोड़ा डिस्टेंस है। गाड़ी लेके तेरे पास आता हूँ। नहीं पहुंच जाएगा। वो स्ट्रॉन्गहोल्ड फायर वगैरह मार कर दो। बंदा बैठा है इसको देख के। क्या आदमी है वो? रिवाइव दे रहा है। बता रहा हूँ। टूटी है भाई। ये गार्ड ले ली। हाँ साथ वाली नहीं कोई है। मेरे को स्टार्ट हो जाएगी। Sniper KIA. ओ भाई। क्यों बेटा? For days. Team back. Don't revive kit here. दोनों साथ हो रहा है इसके पास। Gas mask here. Gas mask है। कौन से पहले दिखा नहीं पैसे क्या है? Got cash here. चले मैं। क्या नो बड़ा बंदा। तो गिरा देना। वो पता नहीं देख के ऐसे बैठा है कि फोटो खींच रहा हूँ। हाय क्या गाड़ी है? ये बॉट्स है। ATC में भी एक नूबड़े स्पॉट हो सकते हैं जो कैंप कर रहे होंगे। कितने सारे बॉट है। ये गाड़ी उड़ा देते हैं ये लोग। पीछे किसी ने कॉन्टैक्ट उठाया वेयर यू आर। बंदे गिर रहे। You can see that right on the left. बंदे गिर रहे हैं। मार रहे हैं। रूफ पे टॉप पे है ब्रो। गाड़ी का टायर फट गया। They pop one of our tires. Get out. I can't move it. इनसे तो पंगे लेना समझदारी नहीं है वैसे। Gas is inbound. Mark the new safe zone. कहीं यहाँ से भी पढ़ना चालू हो जाएगा वो टेंशन हो जाएगी। आजा। The thing is that there is no cover man. So यहाँ से मेरे साथ मूव कर। उनको मोटार मार कर रोटेट करना भाई। अरे मैं हाँ निकलो। आगे वालों की टेंशन लो। Only 25 remain. Fucking noobs. You think? लेट खत्म कर दिया इन लोगों ने।
स्मोक है ऊपर ही हो सकता है. Gas is moving. चलने के बाद यहाँ पे तो पक्का राइट पे लोग हैं. after that they can probably see the rest of the loot. Will not favor airport after this for sure. पोर्टेबल रेडार के लिए Not necessarily. Start squads with 19 people. काफी लोग हैं, सोलो या दो. आराम से मूव करते हैं. Gas is closing. Wait, wait, Get to the Amir, new safe zone. Wait. Then don't engage now. Pull this around. We have a gas mask and all golden gas. पोर्टेबल लगा दे, पोर्टेबल इस बिल्डिंग में ही समझ में आ जाएगा. Portable radar deployed. नहीं You've made it to the top 10. भाई तक क्लियर है, लेकिन राइट पे छत पे बंदे होते हैं. बाय तक तो यहाँ पे लग रहा है, उसके आगे पे ही लग रहा है मेरे को. 10 ही बंदे बचे. रेडार में नहीं आ रहा बुलेट तो I'm अबे बहुत जल्दी बंदे मर रहे हैं. बहुत लोग घोस्टेड होंगे. छत पे तेरे राइट पे छत पे आको, तेरे राइट पे छत पे. हाँ. कुछ कर ही नहीं सकता था. सुसाइड मिशन था. ये Is over. Now it's a go. Actually, Move to the safe zone. मैं हवा में हूँ. You got 2 of them man, Poland. That's fucking crazy. चलो यार मैं खाना खाने जा रहा हूँ. भाई हवा में रहना कोहली यार भाई. ओह ठीक है. हवा में भी कुछ ज्यादा चांसेस तो लग नहीं रहे मेरे को. But two of them. और इधर तो 2 टीम है. हाँ यही बचे हैं, बस यही बचे हैं. who is shooting at you? Fuck. आगे से Fuck. Captain भी आ गया bro. New safe zone located. Yeah, they're shooting from up above. Oh, some. They have the high ground. Sure. तीन ही स्क्वाड बाकी है. हवा वाली स्ट्रैटेजी तो मेरे को पता ही नहीं थी. तो ब्रिज पे बैठा लौंडा. Moving here. Scratch that. Strategy नहीं bro. Always pause before you do anything. I thought you needed immediate help. मैं तो ये सोच के आया था. But how it was flawed. Pistols में तो चारों के चारों बैठे हैं यार. अच्छा 1v4 हो रहा है. अरे मैं बैकआउट कर रहा हूँ. क्या? बैकआउट कर दिया मैंने. मैच रहा है. that was a smart decision bro. 1v2 होता तो मैं ट्राई करता. Maybe you could have. नहीं भाई, कोई कवर नहीं, कुछ नहीं. पिस्टल लेके चारों के बीच में गिरता, कुत्ते की तरह मार दो. Did Pulan get pissed? उसको बुरा तो लगा उसको. Food or something. खाना तो खाना है, लेकिन बुरा तो लगा.
this time to practice. We will be deploying soon. Enemy soldier incoming. Practice is over. The real fight begins now. Enemy dropping into the AO. Tarek boys, let's go. 5 seconds. Stand by to deploy. Okay. Marcus, drop point for your squad. You will lead them in. Afer! We could also go to the Oasis. The mini royal, bro. बहुत बंदे हैं भाई, बहुत बंदे हैं। Enemy soldier incoming. Sweaty players everywhere. There's a lot of people everywhere. मतलब मैं क्या क्या बताऊँ कहाँ दिख रहे हैं? Threats in the area! Contact! Firing at me. कहाँ से पड़ी तेरे को? Baby. चलो ना 4 बंदे हैं। ज़्यादा नहीं है bro. Enemy UAV active. I found a gun. लग रहा है। एक और टीम है। Board. Chasing this guy. Joy, honey. Eyes up! This sector's hot! they're hacking. थोड़े को पता नहीं कि मार किया उसको। और बंदे थे। तो एक और साइकिल पड़ा है। हाँ यहाँ पे साइकिल पड़ा हुआ है। माँ क्यों नहीं हो रही चीजें? गाड़ी. कहाँ पे? 4 कि दोस्त कहाँ हैं? अबे ये तो गाड़ी स्पीड चेंज करके तोड़ रहा है। रुक। अरे यार तो दोस्त का कुछ आइडिया नहीं। बाकी वैसे ओ नो पहल दिया मेरे को। Taking fire! तेरे पीछे से भागो। हाँ क्या तू उधर से? Don't make this a habit, yeah? क्लस्टर भी फेल दिया। I'm impressed. तो हील और कितने हैं? Your team has entered the safe zone. कोई आइडिया कहाँ पे थे? मेरे को डायरेक्शन नहीं ऊपर था पता। लास्ट बंदा. ओके 2 को ले गए थे लास्ट बंदे ऊपर है. Tatas. बाकी पैसे गिरा देना भाई पे। एक सेकंड ये लो पैसे। ठीक है. बंदा मेरे सामने बंदा। बहुत बढ़िया बहुत. बॉटम
पेड़ तो बहुत बड़ा बॉस। मैं तो नई गन चला रहा हूँ टाकवी। You have extra plates on your I have some plates here. Let me use some. Planting mine! Yeah, I have some for you as well. कहाँ पे तो? ये ले। एक स्पेयर भी रख ले। ये लो मेरे पैसे, एक्स्ट्रा पैसे। यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। तुम लोगों ने गन नहीं खरीदे तो मेरे को बताना, मैं ले लूँगा मेरा सेकेंडरी। ये ले मेरे तेरा लॉबी है ना, तू ले ले सेकेंडरी। ये ले। Did you buy primary कोली? नहीं, but I'm good. I have. Yeah, go, buy a gun. क्लस्टर मारिया हमें किसी ने राइट से। Oh fuck, निकल गाड़ी। उसको छोड़ दिया। ये रहे राइट पर पुलिस को। यार आरपी का मिस मैं आरपी पे। एक डाउन है। एक ही था। साला ईगो चालू कर रहा था छक्का। एक ही बंदा था। Probably regrets that. भाई मॉर्गनीज की 6 किल्स हैं भाई। पूरी लॉबी मारेगा क्या सोलो? 20 बंदे मारने। टाकवी ट्राई कर रहा हूँ, टाकवी। I don't see anyone else around. बंदा लैंड कर रहा है ये। Enemy movement. Got one side सर of इधर ही लैंड कर रहा है। चलो You've got फाइट gas कर दिया। inbound. Safe zone relocated. हम अगली जोन के एज पे हैं। ये की हेलीकॉप्टर पे हो। ये बंदा है। हेलीकॉप्टर लेके भागेगा। वो हेलीकॉप्टर लेके भाग जाएगा। Catch him before. पास है। एक टीम ये ओपन में आ गया उनके। लेकिन मार्क सम अदर पीपल। यहाँ पे एक स्क्वाड है 3 लोगों का। हमारे पे आ रहे हैं, हमारे पे आ रहे हैं, हमारे पे आ रहे हैं, हमारे पे आ रहे हैं। फाइट लो। एक खतरनाक कुछ कर रहा है। ओके मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ओके moving here. Stay firm. Copy that. You've got a loadout drop inbound. लोड आउट देखना कोई। एक सेकंड पुश कर रहा है उनको। मेरे सामने ही है। Enemy movement. दो पीछे से आ रहे हैं। एक डाउन है, एक डाउन है। मार। UAV overhead. उसका दोस्त लोड आउट की तरफ है। एनिमी यूएवी। सेल्फ हो गया। Fight, वन fight. शॉट बच गया। बॉट है ये तो। ये तो एक और गाड़ी है भाई भाई। कोई वेंटेज पॉइंट ही नहीं है यार डिसेंट। बेकार है। टाकवी में रेंज नहीं है भाई। ये वाला घर रखते हैं थोड़ा ऊंचे एंड थोड़ा सेंटर में है। अच्छे नहीं जा सकते। इधर पुश करना है। पहले मिनिशंस गिरा रहे ले लो। Dropping ammo here. ओ भाई किसको पड़ रही है? और पे हूँ। कहाँ से? अच्छा दिख गया ये रहा। Enemy marked. ब्रोकन है, डाउन है। एक झाड़ियों से मार रहा है। यहाँ पे भी एक था, उसको ब्रेक करा मैंने। सल्फर हो गया वो शायद। वो पीक कर रहा है यहाँ पे है।
मेरे पास रेंज नहीं है, सेल्फ हो गया। फिर पीछे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा तुम्हें धुएं में नहीं दिखता? बहन से 2 लोग भाग रहे हैं धुएं में। ब्रोकन है वो, वन शॉट। किसी के पास One shot, one shot. कुछ नहीं है। लाखों डेंजरस। बढ़िया। The gulag is locked down. Area is clear. Not. बंदा और लैंड कर रहा है यहाँ पे, और पीछे से बंदे आ रहे हैं। एक्स्ट्रा AR है किसी के पास? अबे फक। AR एमो? बहुत है यहाँ पे तो मेरे पास। मेरे पास पहुँच रहा तो मुश्किल है भाई। Empty rounds here. I want to hold this house actually. I think it's a good spot to hold. ये वाको क्या उधर ही बैठेगा क्या? मेरे पास स्नाइप मार रहा है। स्नाइप डेट यहाँ से। वाको वापस आ जाओ ब्रो। मैं कवर देता हूँ अगर कोई दिखेगा तो। डायरेक्शन में डेफिनेट। यहाँ पे तो है, पहाड़ के ऊपर भी होगा। अबे मार हो जा बोल। टैग किया 1-2 बार। एक लैंड कर रहा है लोड आउट पे, आने दो उसको आने दो। Your team has entered the safe zone. ठीक है बहुत। मार देते यार इसको 1-2 गोली। ब्रेक करा यार मेरे को RP के लेने का मन कर रहा है। कवर दोगे? इस लोडआउट की साइड पे लोग तो होंगे। कवर देना मेरे को थोड़ा सा राइट पर पे। अभी भी तो क्लियर कर रहा है वहाँ पे लेवल में। हम मतलब उसके और आगे होंगे। who will push towards that I'm sure. When the other side, that's what I'm saying now. ये देख बंदा। He's going for the loadout. हाँ। I'm almost out of ammo. Moving. बैठ रहा है इधर। Moving here. बहुत बढ़िया। Threats in the area. Mid caliber round here. 4 ही टीमें बची हैं, एक टीम तो उधर है। Gas is closing in. 3 ही टीमें बची हैं, एक टीम यहाँ पे है, एक टीम उस घर के पीछे है। Movement. लेफ्ट रोटेट करके उनको पेल देते हैं। दो वाले हैं या एक 1 and 3 वाले हैं? टावर पे तो नहीं बैठा कोई। ये वाला घर थोड़ा यूजलेस नहीं है? मेरे सामने ही होंगे अभी तो ये। इससे अगले वाला लेना रोटेट करके। ओह, weapons cache. Armor pouch here. Found some money. Some rich boys. बंदा टावर के नीचे, टावर के पास यहीं पर एक वन शॉट है वो। आगे से मार रहे, थर्ड पार्टी हो रहा है। Go now. 1 सेकंड रीलोडिंग। एक को गिरा दिया। 5. एक तो पेल दिया। प्लेटिंग अप। ओ नहीं कैसा, मैं पहाड़ के ऊपर ही। पेल दो ना, मिलके पेल दो। बढ़िया। फिनिशिंग देना एक ही है। मल्टीपल सेल्फ होंगे इसके पास। Primary objective complete. Good work out there. अरे जी इजी। RAL MG felt good man. पर अभी पूरा bot save है, that's a different thing. टाक भी तो यार बेकार लगी मेरे को, रेज ही दिया उसमें। बढ़िया रेस था RAL का तो।
survivor. Always. क्या बात? अरे मेरे को 2-3 लॉन्ग रेंज वाले मिले थे आई थिंक। तो वॉर्निंग्स ने तो गांड मारी है पूरी लॉबी की गांड। स्टार्टिंग से मेरे पास आरपी गोली का कम से कम 10 किल होता है मेरे पास। 10 किल ज़्यादा ही होता है। पोलैंड का क्या सीन है? तो टाइम लगेगा उसको तो अभी 11:30 उनके टाइम पे आए। चलो ओके फाइन। अपन भी 2 मैच खेलते हैं उसके बाद डेरा ब्रेक ले लेते हैं। Wipe up while you can. We will deploy. خدت من شيء بس كيف العاب بعد يا طيب الطين من كام باكستان مسوي لي اخوي. Mustafa X Gamer. Warm-up is over. Stand by for deployment to the war zone. इधर जाना है। अल्शरिम पास। चलो Okay. 5 seconds, stand by. Set a drop Fully point for killed. your squad, soldier. We should land on my mark. Enemy dropping into the AO. Take that most wanted. मोस्ट वांटेड करना है। बंदे आ रहे हैं हमारे ऊपर ही तो नहीं कर रहे। कर लो। Hunt the enemy down. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। कर रहा हूँ स्टार्ट जाके। Your squad mate was marked a most wanted target. Keep them protected. भाई इस पूरे घर में गन नहीं मिली। ये चूतिया घर है ये। बंदे होने चाहिए आसपास।
Hostiles dropping into the area. Watch the skies. एनिमी सोल्जर इनकमिंग आ गया. broken है. ये body अच्छी up to man. Where are your girlfriends? You are going to help me find your friends. इसके देख नाम पे क्या है? पुश कर रहा हूँ उसको. यहाँ पे बंदा जा रहा है वो, और जा रहा है और जा रहा है. तो ढूंढ के मारा है. Are you running, boy? वो यहाँ पे बंदे. ये घर लेते हैं. मैंने मार किया बंदे. घर मतलब बिल्डिंग. मेरे साथ 3 हो गया. डाउन है. एक ब्रोकन है छत के ऊपर वाला. एक को डाउन के अंदर. तो हो गया वो. एक और डाउन है. ऊपर नहीं माइन ला रखे हैं. पीछे से आ गया. पेल गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I was trying to kill him before you died, but Enemy soldier incoming. अंदर लैंड कर रहा है. ये reloading hold रुक जा. Planting sonar. यहाँ आसपास तो नहीं है. पैसा होता है. तो बस ढंग की गन नहीं है. मैं ये राल एमजी है बस एक रैंडम. बाइक इधर मूव करते हैं धीरे धीरे. मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे इनको मारा था उनको जाके लूट करूँ क्या. वो तो मैंने पूरा लूट लिया. पैसे तो नहीं है. गन तो मिल जाएगी वैसे. गन तो ये पैसे तो हमारे अच्छी पास अच्छी है. काफी हैं. वाको को बाय बैक कर सकते हैं. Enemy UAV active. ये भी आई है. यूएवी Squad mates have been cleared for redeployment. عندي تيم ثانية. बंदे हैं मेरे पास. हाइब्रिड किलर. वहाँ पर वहीं पर. Tell me what's the deal, bro. I can provide cover. मोस्ट वांटेड बगल में ही है. हवा में है ये तो. हेलीकॉप्टर. एक बाय पे मेरे को भी जाना है. I have the money to buy my shit now. हमारे आसपास बंद देते हैं. हाइपर किलर करके कोई. Yo brother, where are you? हाइब्रिड किलर वेयर यू एट मैन. कम से हेलो. I'm in your ass. I'm in your ass. चलना लौड़े. I'm in your बाय ass. बाय 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 बाय. एक डाउन करे दूसरा डैमेज करे. जल्दी पुश करो. वो रिवाइव कर रहा है. रिवाइव कर रहा है. वन शॉट बची है वो. वेयर इज योर गर्लफ्रेंड? डिड ही रन अवे? Easy, I got ya. New safe zone located. Mandi. Mandi. I'm about to die. Just hang on. مادي هتشيل. بقتل نفسي عشان ما يدور على الوضع. Let's talk. Good job. और होंगे. एक और बचा है इनका. ढंग की गन दे दो भाई. Hostiles dropping into the इनका area. लैंड कर रहा Watch है. the skies. यहाँ था क्या था? माय फ्रेंड. यस माय फ्रेंड. यहाँ पे बंदा. हाउ आर यू? नो माय फ्रेंड. ब्रेक करे. आई एम बंदा ब्रेक करे. ट्रस्ट मी. छत पे क्या वो? हाँ इस छत पे. हाँ हमारे डॉट ऊपर है. Loadout drop headed your way. नीचे. ओ बढ़िया. मार दिया उसको. कोई और पे. थर्ड पार्टी. Simon, Simon. The fuck is Simon? An enemy here. ये बात कर दी. Copy. UAV is on बहुत बढ़िया bro. online.
जो सीढ़ी चढ़ते हुए पड़ती है ना। Gas is moving. यहाँ पे एक टीम आई है अभी। Moving here. बहुत ही गंदी जगह है यार ये। छत पे कैसे जाते हैं? UAV is bingo fuel. RTV मेरे को कोई containers in the safe zone. $800 दे सकता है? ये तो पूरे कोई है जगह आसपास? Got some नो cash. थैंक्स ब्रो। बहुत बढ़िया। छत पे जाके खड़ा दिस बिल्डिंग इज सॉर्ट ऑफ टॉल राइट? बंदे आ गए। एक गिरा तो भाई वेक्टर में जाना चाहिए मेरी। क्या है मुझे? कोई ड्रोन चला रहा है। SMG तो बहुत है मेरे पास। एनीथिंग एल्स आई डोंट हैव। लेफ्ट में जो है कोई ड्रोन चला रहा है। एक तो टावर पे बैठा है, इसको देखो। स्नाइपर है। अच्छा, एक स्नाइपर नीचे पड़ी तो ये भी। यार गलत एंगल पे बैठा है। ब्रोकन। चल लौड़े। सल्फर हो जाता है साले के पास। ओरे ओरे फॉग से भाग रहे बंदे। गाइस देख रहा मैं हूँ। कहाँ पे आएगा? Enemy moving. यहीं मैं पे उसको बीम नहीं कर पाऊंगा सोलो। या इस दीवार पे चल के आ रहे हैं वो। भाग रहे देखो मेरे को देखो, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे नीचे कूद गया। ब्रेक करा बट Supply couldn't kill crates him। are restocked. Advise you load up now. लेफ्ट को नीचे कूदा है। ये रोड तो पे जोन के आगे से भी मैं होल्ड कर रहे थे बंदे। एक गोली लगी है। और अब जोन हमें खुद चेज करनी है। Hostile UAV in the area. चलो चलते हैं उनमें। इधर नहीं है बंदा। Movement. आई थिंक पहले अंदर चलते हैं। सर्वाइव फर्स्ट किल सेकंड। दैट्स अ मिस्टेक आई मेक एवरी टाइम। स्पीड है। दर चोद है तू, मादर चोद है तू। इतना बड़ा कैंपर जिंदगी में नहीं देखा मैंने। कहाँ से बढ़ रही है? पीछे पीछे जहाँ से हम आए हैं वॉर्गीज एग्जैक्टली वहीं पे। देखने की कोशिश कर रहा हूँ। Gas is inbound. यार एंगल नहीं है मेरे पास। Going to the house that I marked. I mean, I'm coming to it. ठीक है Head to the safe zone now. स्टैक कर ले। स्टैक कर ले। एमओ मेरे पास है। लेटेस्ट स्टैक कर ले बस। मुझे दे दे। मुस्तफा ओके पेंचर यहाँ पे सब बंदा बोल Enemy dropping into the AO. गिर रहा है। तो गिरा दिया यहीं पे डाउन है। Armor here. Throwing Semtex. हाँ सब दोस्त मार रहा है मेरे को। अरे भाई गिरा दिया। डाउन हो ना। टच कर दे, टच कर दे। उसको यार, टच हो गया। उसके बंदा साथ में था रिवाइव करने के लिए। और सॉरी मैंने एक तो खत्म हो गया। वो मैंने पापा एक जिसको मैंने डाउन करा था वो पीछे से पीछे से पीछे से। ओ भैंचोद वेटिंग अप। नानी वाली तेरी खिड़की से नजर आ रही है इधर। नेट डाल रहा हूँ। नीचे ही है भाई ये बंदे हमें होल्ड करेंगे। Threats in the area. You're in the top 10. फक आई एम डेड। हमारे जस्ट नीचे किलोमीटर का बाय द वे आई जस्ट सॉ। व्हाट द हेल? अच्छा कोई तो आगे चल रही है यार गोली मार के।
gas Particle inbound. sector back number. Marking new safe zone. Eyes up! This sector's hot! Hostile recon deployed. रिकॉन कर रहा हूँ फ्रेंड उधर ही बंदे हैं उधर ही बंदे हैं एक बात है चल साले रिकॉर्ड करेगा तू नहीं गिरा दिया मेरे को आगे पोजीशन आ गया राइट राइट ऊपर थोड़ी प्लेट्स Zip मिल है। जाए भाई desperately need plates फुल लग जाने बस बेटा लेकिन पड़ेगी तो बस You're losing ground. घास में लेटे हुए होंगे क्या पॉइंट दिख रहा थर्मल स्कोप में भी Tossing smoke grenade. वो बंदा एक आजा भागा let's go Throwing smoke. आ गया मोटरसाइकिल वो घर के अंदर है राइट से पड़ी है तो लास्ट वाली फाइट ही हो 5 ही टीम बची हैं let them fight 5 remain. Stay sharp. पीडी है बच्चा थर्ड पार्टी करना है थर्ड पार्टी करना है 2v2 है नहीं 2v1v2 है आजा आराम से कोई जल्दी नहीं है भाई यहाँ पे तो है एक टीम दूसरी टीम का है इस घर में होगा ना कोई बस राइट वाले को ध्यान रखो बहुत ही लोग दिख जाएंगे अपने आप लेफ्ट में एक अच्छा ये तो कोहली है You've got gas inbound. Safe zone relocated. कंप्रेस हो रहा है लास्ट में लेना आजा फुली भाई भी सबसे पहले फुली कहाँ जा रहा है दीवार से चिपक जा और एक पेड़ के पीछे क्या कर रहा है Attack me. और है बंदे ठीक है राइट पे पेड़ के पीछे जाओ इस तरफ को है आई एम नॉट श्योर राइट पे लेटा हुआ है वो बैरिकेड के पीछे हाँ इस रोड का बैरिकेड उसके पीछे लेटा हुआ है मुस्तफा ओए देख रहा मेरे ऊपर शिट एक ही बचा है ये 2 बचे मेरे पास दीवार पर खड़ा हो सामने कूद के आ गया वो Next time, we take the win. चलो ब्रेक लेते हैं तुम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो चलो ओके चलो
यो स्ट्रीम ऑफ किया ब्रेक ले ब्रेक ले रहा चलो बता जब चलो
What's our next move? In my quest to My name is Shansen Gupta. I'm the night manager. You're a lead actor, a star. Hey, you're the key. सब कुछ आपका ही है. मैं बस सैरगारी कर रहा हूँ. राजा चैन की नींद सो सकता है या नहीं, ये पहरेदार की नीयत पे डिपेंड करता है. The night manager. Disney Plus Hotstar पर. Fast track quirks for quirky daters.
outside, please find a shelter or another safe place. All citizens are strongly urged to remain calm. All citizens are advised not to leave their homes. Marco. You have tallies approaching. I still don't remember a thing. I don't remember any of it. I only remember the interpreter. Why you want this job? I need the money. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. No, not me, sir. Money isn't the reason he wants this job. It's Alabama killed his son. Stop the vehicle, Sergeant. We don't want to go down this road. You're out of your bounds on it. You're here to translate. Actually, I'm here to interpret. John, you have tallies approaching. For 3 weeks, this family believed you were dead. We owe that man your life. There wasn't enough for him to carry me across those mountains. Now he's hiding in a hole somewhere. I should be in that hole. You just
कल के फैशन शो के लिए पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके बनाया है। कैसा है? अच्छा है, पर वो चमक नहीं। चमक वो तो आ जाएगी, पर उसके लिए पाउडर की धुलाई के साथ टिकिया की घिसाई भी लगेगी ना। रिन लिक्विड कपड़ों को चमकाए अकेले ही। ये कपड़ों के रेशे रेशे में जाए और उन्हें चमकदार बनाए। रिन, चमकते रहना। If you don't think there's hope for the world, why bother going on? Keep going for family. About a week from now. Hey, what's up? Welcome back everyone to another Warzone 2 video. In today's video, we're going to be talking about a gun that will be meta-defining in the months to come in Warzone 2. Now, you guys know I am not the guy to BS you. Hey. I recently found myself in Dublin, Ireland. That's the Armalite AR-50. State of the art. That's the Armalite AR-50. State of the art. Accurate to 2,400 meters. I got the loophole Mark IV on it now, but I can always upgrade you to a Schlitten Bender. Single shot, bolt, simple, effective, reliable. It fires the 50 caliber BMG. Very effective against soft targets in light cover, behind cars, small diameter trees and such. As always, I've gone to the trouble of grinding down the serial number. No, unless you ground a hole clean through, acid will recover it. Well, that would be true, but I follow up with a... I've gone to the trouble of grinding down the serial number. No, unless you ground a hole clean through, acid will recover it. Well, that would be true, but I follow up with a pass through a random stipple machine press. Hides the patterns and the metal density. Should throw off your X-ray diffraction and some other higher-end methods. Nothing's perfect, of course, but this is close. Looks like a hernia with a scope on it. 34 pounds, not including your bipod, which adds some heft. Too much gun. For most applications, I would tend to agree. SR-25 match rifle. Eugene Stoner designed semi-auto. That's about 11 pounds there. Not quite the range or the punch of the AR-50, but you're still talking about a .5 MOA at well past 1,000 meters. I've heard they're prone to jam. It's been known to happen in the field, but there's not a semi-auto built can boast it never jams. If that's a concern, you ought to stick to bolts. Good bolt-action rifle, if you jammed it, I'd wager you were setting out to do so. Which brings us to the M40. Tried and true, battle-tested. Essentially the same rifle used by Marine snipers since 1966. It's light, accurate, good for soft targets in the 8 to 1,200 meter range. You seem to know this one. Oh, yeah. You could say that. That's the A1 model. There's not much change from the original. Biggest difference is the stock. It's fiberglass instead of wood. They changed it over in 1970 or so. Good. Wood. Work like hell. You get it wet, you put it in the sun, gone. Somebody probably should have figured that out before they sent it into a damn jungle. Yeah, probably.
if these aren't to your liking, I could get my hands on a few more. No, I've changed my mind. Thank you. I don't need anything at this time. For your trouble? Yes, no trouble. I make my living on repeat business. When you need what I'm offering, you know how to find me. Shot left, 1.5 minutes. How many rounds have gone through the tube? For a 7.62, you could put 3,500 through it, never know. It's about how tight she shoots. And this one's tight as they come. I'd say there's a breeze picking up downrange. Your barrel gonna be cold? I suppose so. Well then, you better have paid attention to that shot. I better have. Adjusting right, 1.5 minutes. Send it. Hit. Center hit. Did you know dead skin cells hide our real glow? The tape test will show us. See, our real glow was hidden under these dead skin cells. Remove them with Pond's Bright Beauty Face Wash. Its vitamin D3 enriched formula removes dead skin cells and reveals your real glow. Show your real glow. Pond's Bright Beauty Face Wash. Yum, yummy, yummy. Yum, yummy, yummy. Yum, yummy, yummy. Yummy, very full tummy. फुल टमी फील कराए हैवी इसलिए न्यू लिप्टन सिप एंड डाइजेस्ट इसमें है ग्रीन टी के साथ रियल इंग्रेडिएंट्स अदरक रॉक सॉल्ट और तुलसी जो हैवी मील्स को करें डाइजेस्ट लिप्टन सिप एंड डाइजेस्ट I suggest you don't change up your ammo. Stick with the 168 Rainbow Tail Hollow Point. If it's an open shot, that is. If you got to shoot through a heavy window, I'll up you to 180. But as you know, you'll have to recalculate the shot. 168 will do it. How many boxes? Just the one. No, it's on the house. Oh, one last thing. No offense. None taken. Look. Meaning, do I see it? Yes. You see it? Basically, any lawman worth of salt's been stopped at, yeah. Assuming that's a deal breaker? Yes, it's a deal breaker. Well, if stealth is what you're aspiring to, you best go with something more compact. 38 special, snub nose. Got a concealed hammer, so it doesn't catch on your belt when you draw. Tried and true, no nonsense about it. 5 shots, automatic, and it's 10 in the mag, 1 in the chamber. If you can't get it done with 5, then you're in the spray and pray, in which case I wouldn't count on another 6 closing the deal. You load that with 158 grain hollow points instead of your standard wad cutters. It's got plenty of stopping power. Can't get more dependable than a wheel gun. Right on with this. That snubby'll seal up real nice. Carry it IWP. A little harder to draw from, but it's really no substitute if you're intent on fooling a vigilant eye. Comes in polymer too. I prefer the feel of leather. Old school, I guess.
sure it's on the correct side. If you're right-handed, it is. Are you sure? You'll be able to feel better on the left side. General rule, you don't want to cross draw, not unless you're going to be sitting. You know, store clerks, card gamers and such. Either way, you're going to want to practice your draw a lot. Because if you're all fingers, well, it might could be him keeping the piece instead of you. Catch my drift. What's this? Well, that there is why you're going to pay me 5 times what you pay your neighborhood gun store. Serial number has been found out. So, to state the obvious, I don't want to be caught with this on me. No, sir, to state the obvious, you don't. You know, mister, I've been providing my services for the past 30-odd years. Thinking that time I'd learned better than ask a man his business, especially not one preferred by the lawyer. But I do feel the urge to ask you. Are we strictly talking defense here? Yes. Absolutely. Defense. Why? Because if it's just personal protection, aside from a bucket of money, you'd save yourself a potential felony 2-spot if you carry a weapon with a defaced serial number if you just buy it legally. But if you did have to use it, wouldn't it still be better to use one that couldn't be traced? This is the West, boss. New Mexico's not a retreat jurisdiction. Man steps to you bent on doing you bodily harm, you got every right to plant your feet, shoot to kill. Some call it a moral right, and I do include myself within that class. All this to say, I'm happy to take your money, but if you're not a convicted felon, you might best be advised to bear your arms within the confines of the law. It's for defense. Defense. I'll take it. I got the word this won't wind up crossing the border. It's a never-leaving town. Is there a manual, instruction manual? I pulled some off the internet. It's in there. Well, good luck, I guess. Happy birthday, Mr. Lambert.
perfect Valentine's Day ideas? Scan a Cadbury Silk right away for the most unforgettable love tips. Hi, hello. My name is Price. Is that true? You didn't bring a gun? I didn't think I'd need one. Let's go. But we need 3 guys. No, we don't. Come on, let's go. He'll be fine. And now that I'm doing the job alone, I get the full 1,500. We agree upon that? Sure. You're late. I wonder how this is supposed to work. I mean, who goes first? You know, do I hand over the pills first? Or do they give me the money and then I hand over the pills? I mean, I guess it makes sense if we just exchanged at the same time, right? I mean, that's fair. Just count to 3. Probably the less talk, the better. Right. Yeah, I suppose you could really overthink something like this. Yeah. Well, in any case... Here is what is going to happen. You're going to take the money. You're going to count it. It's all there. You hand them the pills. Easy peasy. You had your food, no food. I knew we needed 3 guys. I knew it. It's a 3-man job. Do you have it? Do you have the money? Is it all there? We're short $20. That's fine. Agreed amount or no deal. You can pay me now. Huh? How did you know? How did you know not to bring a gun? This 1,500, I'll just say it. You're getting a bargain. You put in a lot of legwork before coming here. Now, that fella you just met with, name is Ignacio Varga. Runs with a connected crew of drug dealers. Now, his deal he's doing with you, he's doing outside his crew. He doesn't want his bosses to know. So it was in his best interest that things go very smoothly. Wow. The lesson is, if you're going to be a criminal, do your homework. Wait, I'm not a bad guy. I didn't say you're a bad guy. I said you're a criminal. What's the difference? I've known good criminals and bad cops, bad priests, honorable thieves. You can be on one side of the law or the other. But if you make a deal with somebody, you keep your word. You can go home today with your money and never do this again. But you took something that wasn't yours, and you sold it for a profit. You're now a criminal. Good one, bad one, that's up to you. I can get more pills. And I am sure that fellow will keep buying. Once you get us home, you can sleep on it before you decide. It's me. I got a new car. You like it? We're not taking that to the meet. How are we gonna get there? I'll drive my car. Why? This business requires restraint. That is the opposite of restraint. But
I like it. And I'm proud of it. Good. And you be proud of it on your own time, but not with me. I'm not getting in there. Okay, then, don't. Honestly, you don't really do anything. I've been paying you the salary of 3 people to just stand behind me. You know, and these last few deals, this Nacho fellow, he's been coming alone. If he doesn't need backup men, then, I mean, why do I need you? I should just go alone. I'm throwing away money. Just tossing it away into the trash. Look, you do whatever you want, but I'm advising you, do not go to that meet without someone watching your back. Yeah, well, of course you're gonna say that. I mean, you don't want to be out of this easy peasy job. Well, I'm sorry, but this is the gravy train, and it's leaving the station right now. So, last chance. All aboard. Seriously, last chance. I'm gonna count to, say, 10, and then I'm... All right, then. Your services are no longer needed. अरे ड्रीम कैच नहीं ये तो बस अच्छे से सोया है ड्रीम सीक्वेंस हाँ ना ये तो बस अच्छे से सोया है नया सीक्वल नेचुरा जिसमें है नेचुरल हर्ब्स और मेलाटोनिन जो दिलाए आपको अच्छी नींद हर रात सीक्वल नेचुरा आपका दिन दिनक दिन पैसे ने काम पर लगा रखा है गेट ईटी मनी जानो बेटर रिटर्न के लिए कब और कहाँ इन्वेस्ट करना डाउनलोड ईटी मनी नाउ What are you doing here? I work here. Oh, small world. So is this the parking lot for the police station? It is. You don't know if they validate, do you? Why don't you pull around over there? We'll have a little talk. Okay. Why are you here? I have business with the police. And what business might that be? Well, if you must know, I was robbed. Somebody broke into my house and stole my property. Your drugs. Yeah, but obviously I didn't tell the cops that. I'm not stupid. You've already spoken to them. A couple of them came by my house. But it's not the drugs that I care about. I mean, I care. It's my baseball cards I need back. Your baseball cards? Yes. I have a very valuable collection of baseball cards, and someone stole them. I guess I shouldn't be surprised I have to tell you this. But it's probably a bad idea that you willingly talk to the police, being a criminal and all. I'm not here as a criminal. I'm here as a crime victim. Just because I occasionally sell some pharmaceuticals, I no longer have a right to protection from crime? I was very careful when I talked to them. I mean, they have no idea about my other business. Have you already made your report? Why are you here? They called me. They have a few more questions. They are very dedicated to finding this thief. Since you're new to this, let me explain it to you. They've invited you on a fishing trip. What's that? A fishing trip? Those cops have no interest in helping you get your cards back. You're obviously under suspicion. There was nothing there for them to see. I refer you to our previous conversation and this blinking neon sign on the vehicle that says drug dealer. They suspect you. They will get you in there, pretend to be your friend, lull you into a false sense of security, and then they will sweat you. And you will break. I disagree. Not open for debate. You go home now. But I have an appointment. Break it. And if they call, you do not answer the phone. What about my baseball cards? Cost of doing business. No! No! I am getting those back. I will take the risk. No, you won't. Because then you'll be putting my well-being at risk. I have to.
those cards? Some of them were my dad's. And I am getting them back. I'm getting them back. I'll find you cards. Is that something you do? Wow, that is so generous of you. Oh, it'll cost you. Oh. Okay. We should discuss some sort of financial arrangement in which I will. Okay then. Jesus. She deserves the best. I'm sure the boys at the chop shop are real gentle with her. No. Do you think I'd be caught dead driving that thing? It looks like a school bus for 6-year-old pimps. All right, shall we move this along? We good? Yeah, that looks like everyone. Yeah, they're here. Looks like everyone's here. And now the other item. You know, I can't help thinking an apology was in order. It's the police again. Carl. Yeah. Hold the fort for a few minutes, would you? You got it, Mike. Well, hey. You're here. This your idea of stealth? I never claimed to be good at this. Any of it. On that we could agree. Yeah, I know. That's why I'm here. I want to hire you again. Do what now? Hire you as my backup man. Same terms as before. I don't want to make the same mistake as last time. You don't want to make the same mistake. Then don't get involved with whatever it is you're getting involved with. But I'm involved already. I'm not. It's Nacho Varga. What about him? He broke into my house. He was inside waiting for me. Somehow he got past my security system. I have no idea how. All you had to do was unplug your phone lines. Oh, that's it? Huh. What do you want? Pills. Well, not exactly. Empty Lydrostel capsules. Lydrostel? Yeah, they're like nitroglycerin. And he offered me money. And lots of money. Way more than they're even worth. But I'm afraid if I don't do it, or even if I do it, I don't know. Tell him he can't get what he needs. I already ordered them. I mean, the shipment gets here in 2 days. He knows. Then make up an excuse. Fine, 3,000. I'll give you 3,000. I'm not interested. And you find a way out of it. But... Not interested. Alan loved to hike. We even opened a camping supply store. I helped him with the mail order side. This was 8 years ago. He went hiking in Gila National and never came back. They found our car, but they never found him. And I don't know if he slipped and fell or had a heart attack or met someone who didn't like the way he looked. I don't know. And even after all these years, not knowing how he passed or where he is, I wish it didn't matter. It does.
It's me. You make the deal? No. Not yet. Why? I'm in. Really? He called me, for obvious reasons. Look, I'm not here to rip him off. He has his stuff, right? This is a model of a part. On the 22nd of June 1941, Adolf This video is part of modern history. It is basically a crash course wherein you quickly learn All Justinian's demands. Belisarius receives new orders. He is to cross the Strait of Messina and reconquer Italy from the Ostrogoths. Belisarius lands in Italy with barely 8,000 men. The bulk of his troops are infantry, including 3,000 Isaurians, fierce warriors from the Taurus Mountains of Anatolia. His cavalry includes Hun and Berber mercenaries, as well as the elite Bucalari, the picked troops maintained by Belisarius, and other senior commanders. As in North Africa, he is accompanied on campaign by his wife Antonina, a capable and trusted ally of Empress Theodora. That the Emperor entrusts the campaign to such a small force, when the Goths can field an army 4 times its size, indicates Justinian's supreme confidence in Belisarius. But it is also a sign that he has badly underestimated the Goths and their will to fight. Belisarius's army is welcomed by southern Italians and meets no opposition as far as Naples. This city has strong walls and a garrison of 800 Goths. Belisarius appeals directly to its citizens, urging them to throw open the gates and warning of the dire consequences of an assault.
I pray that an ancient city which has long been inhabited by Christians and Romans may not meet with such a fortune, especially at my hands as a commander of Roman troops. The citizens of Naples are divided, but ultimately their leaders reject the demand to hand over the city. When Belisarius's troops sneak into the city using an old aqueduct, there is a savage slaughter of Goths and Italian citizens alike, until the general can restore order. The main Ostrogoth army has been standing idle 60 miles to the north. Theodahad, never suited to military command, and now unsettled by omens, does nothing to save Naples. It's his own death sentence. He is deposed and killed. Witigis becomes the new king of the Ostrogoths. He is in his 60s, but he's an experienced soldier who fought alongside Theodoric the Great. He assumes that Belisarius must be leading a large army up from the south, and wants more time to gather his forces. He also plans to negotiate a truce with the Franks, which will free up more troops for the war against the Romans. So, leaving 4,000 men to hold Rome, Witigis withdraws to Ravenna. Belisarius garrisons Naples, and advances up the old Roman road, the Via Latina, to Rome. But as he nears the great city, the Goths simply abandon it. They march out through the Porta Flaminia, as Belisarius and his army march in through the Porta Asinaria, a gate which, though much restored, survives to this day. 60 years after the fall of the Western Empire, Rome once more belongs to the Romans. Belisarius duly dispatches the keys to the city to Emperor Justinian. Rome in the 6th century is still a great city, but a shadow of its former glory. In its imperial heyday, Rome's population had been around 500,000. Now it's just a fifth of that. But it remains the seat of the Roman Senate and the Pope, and a city of intense emotional and cultural significance to all Romans. The city is also notoriously difficult to defend, which is why the Goths have abandoned it. The famous Aurelian walls are crumbling, and at 12 miles in length are too long for a small army to easily hold. The Goths had also worried that Rome's large population might turn against them. Belisarius is down to 7,000 men, not enough to face the Goths in open battle. So he sends detachments to garrison key strongholds along the Via Flaminia, the road to Ravenna, which he hopes will delay the inevitable Goth advance. While in Rome, he and his men begin hurried preparations for a siege. The walls are repaired, and merlons are added. A deep moat is dug around the city. The granaries are filled with grain. All Rome's adult male citizens are conscripted into the city guard. Witigis, meanwhile, has been told how small Belisarius' army is. Embarrassed by his earlier caution, he gives the order for his reinforced army to march on Rome. His chief concern is to get there before Belisarius can escape. But Belisarius has no plans to flee. अगर आपको भी लगता है कि डिग्री हर जगह होती है, that straw isn't filled. Not right, but we're India's best alternative to an MBA. Amin, Arevan, love you. Oh, hello. Hi. Have you lost your mind? ये रास्ते में टांगू छोड़ेंगे
मिलियनेयर्स आपके काम नहीं आएंगे, पर उनके इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स जरूर काम आएंगे। 50 एक्स्ट्रा ले लो यार। स्मॉल केप्स पे इंडिया की टॉप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स बनाते हैं रेडीमेड स्टॉक बास्केट्स। डाउनलोड स्मॉल केप्स। Equity investments are subject to market risk. Read all related documents before investing. And whoever of you has hopes of setting foot in Rome without a fight is mistaken in his judgment. For as long as Belisarius lives, it is impossible for him to relinquish this city. Such were the words of Belisarius. 537 AD. In early spring, Vitiges leads a huge Goth army, probably more than 30,000 men, down the Via Flaminia, sweeping past the small Roman outposts. Belisarius plans to fight a delaying action a mile and a half north of the city at the Salarian Bridge. But his infantry, terrified by the size of the Goth army, abandon the bridge without a fight. Belisarius is left facing the Goth army with just 1,000 horsemen. He orders his men to charge. Belisarius himself fights in the front rank. Scores of men fall around him. Goth spears finally drive Belisarius and his men back towards the Porta Salaria. At first, its defenders don't recognize Belisarius, covered in dust and gore, and won't let him in. He's forced to launch another desperate charge to drive the Goths back from the walls. Finally, the gate is opened, and he and his men get back into the city. The siege of Rome begins. The city is too large for Vitiges to completely surround. He builds 7 fortified camps north of the city and cuts the aqueducts that have supplied Rome with water for 800 years. There will be no baths for the Romans, but the city's wells will still supply drinking water. When Belisarius rejects calls to surrender, the Goths begin building rams, ladders, and siege towers for a major assault. 18 days later, they attack. But their inexperience in siege warfare is soon evident. Their towers are pulled by oxen. The Romans shoot all the animals, and the towers are left stranded. The Goths assault the city from multiple directions. The mausoleum of Hadrian, converted into a fortress, comes under heavy pressure. But eventually, the Goths are thrown back on all fronts. That night, the Romans celebrate a great victory, lighting fires and singing from the battlements. Both sides prepare for a long siege. Belisarius is an inspiring presence in the city, active, calm, and confident, even when others begin to despair. He has written to Justinian urgently requesting reinforcements. Now he oversees every aspect of the city's defense and supply. He orders all non-combatants to travel south to Naples so there are fewer mouths to feed. He has the keys to the gates changed regularly to reduce the risk from treachery, while his Berber mercenaries patrol at night with dogs to detect any surprise attack. His wife, Antonina, also takes an active role. When the Pope is suspected of conducting secret talks with the Goths, she demands, "Tell us, Lord Pope Silverius, what have we done to you and the Romans to make you want to betray us to the Goths?" The Pope is arrested and sent out of the city. A month into the siege, Belisarius receives much-needed reinforcements. 1,600 cavalry, mostly Huns and Slavs, led by Martinus and Valerian. Belisarius has seen that the Goths have no mounted archers. Now he can use his own to make hit-and-run attacks against the enemy. A few hundred horsemen will ride within range of the Goths, shower them with arrows, then fall back under covering fire from the city walls.
Procopius counts 67 actions of this type, both large and small. Almost all are won by the Romans because of their superior cavalry. The victories raise morale and frustrate the enemy, but they will not break the siege. The situation deteriorates dramatically when the Goths take Portus, Rome's port at the mouth of the river Tiber, making it much more difficult to get supplies into the city. By September, 6 months into the siege, hunger and sickness begin to take hold. Even the army's mules are killed to make sausages. The citizens of Rome beg Belisarius to stake everything on one decisive battle for the city. But he refuses, telling them, "You act as though you were playing dice and want to risk everything on a single roll, but it is not my custom to choose the short course over the best course." Instead, Belisarius sends Antonina and Procopius to Naples, with instructions to use his authority to requisition all grain and every soldier who can be spared, and send both to Rome. 500 men and a convoy of supplies are soon rolling up the Via Appia. They're followed by 1,800 cavalry reinforcements, who land at Dryas, modern Otranto. Then 3,000 Isaurians arrive at Naples aboard grain ships and travel on to Ostia by sea. After months of delay, the vast resources of the Eastern Roman Empire are finally coming to Belisarius' aid. The garrison of Rome launch a series of diversionary attacks on the Goths. These allow the supplies, under Antonina's direction, to slip into the city. The threat of starvation is ended. It's the last straw for Vitiges. His own men have been camped outside Rome for almost a year, harassed by the enemy, themselves decimated by disease and hunger. The Ostrogoth king asks for a truce, to open negotiations with the emperor. He offers Justinian all of southern Italy, but it is not enough. The initiative has swung to Belisarius. Belisarius has sent an elite force of 2,000 cavalry, commanded by John, north into Picenum, behind enemy lines. When the Goths break the terms of the truce, Belisarius orders John to unleash hell. Almost all the Goth warriors are away on military service. Their farms and settlements are completely exposed. John sacks, burns and plunders at will, enslaving hundreds of Goth women and children. Romans are not harmed. Vitiges' uncle gathers a small force to challenge John. सुना था कि मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देगा। ये गलत सुना था सर। ये सर कुछ पर छोड़ दीजिए। हमारा साथ दिया पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के वक्त आपकी मदद के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार पॉलिसी बाजार। They're no match for his Bucalari. John ignores the Goth strongholds at Urbino and Auximum, but at the invitation of its citizens occupies the walled city of Ariminum, just 30 miles south of the Ostrogoth capital at Ravenna. Vitiges has no choice but to abandon the siege and march north to defend the Goth heartland. Against the odds, under-resourced and outnumbered, Belisarius has triumphed in one of history's most epic sieges. A siege that has lasted 1 year and 9 days. Because of him, the city of Romulus and the Caesars once more belongs to the Roman Empire. The war against the Goths in Italy seems to be entering its final phase. Belisarius' position appears unassailable. But
As every emperor knows, the history of the empire has been blighted time and again by the treachery of overmighty generals. Belisarius's victories are as glorious as any in Rome's history. How can Justinian not regard him with suspicion? In 538, Italy's largest and most prosperous city is not Rome or Ravenna, but Milan, to the Romans Mediolanum. Its citizens wish to be reunited with the empire, and at the Bishop of Milan's request, Belisarius sends a small force to aid them. They defeat local Goth forces at Ticinum and enter Milan in triumph. But in central Italy, Belisarius faces a dilemma. One of his best generals, John, nephew of Vitalian, has taken Ariminum with 2,000 elite cavalry. Now King Vitiges and the Ostrogoth army is marching from Rome and will soon trap him in the city. Belisarius orders 2 trusted officers to get there first with infantry reinforcements. They are to swap places with John and his valuable cavalry, freeing them up for mobile operations. But when the reinforcements arrive at Ariminum, John refuses to obey Belisarius's orders. Instead, he adds the infantry to his own force and prepares to hold the city. Within days, John is cut off and under siege. The Goths make their first assault with a giant siege tower. In heavy fighting, the Romans beat them back. But John does not have enough supplies to hold out for long. John's insubordination puts Belisarius's entire campaign in peril. He will lose some of his best troops if Ariminum falls, but a dash north risks leaving several strong Goth garrisons in his rear, including 10,000 experienced Goth warriors at Auximum. Belisarius's advance meets with early success, as the Goths at Tudera and Clusium surrender without a fight. As he ponders his next move, news arrives that 7,000 Roman reinforcements have landed near Firmium. Belisarius marches to join them and meet with their commander, one of the most powerful men in the empire, Narses the Eunuch. Narses, Praepositus Sacri Cubiculi, Grand Chamberlain of the Palace, is Justinian's closest advisor. As a eunuch, he can pose no dynastic threat to the emperor, and so is entrusted with enormous power and influence. Narses had distinguished himself during the Nika riots, bribing sections of the mob to switch sides, while Belisarius and Mundus had dealt more directly with the rest. Belisarius has military command in Italy, but he cannot simply issue orders to someone as important as Narses. So he convenes a council of war, seeking agreement on the way forward. Belisarius's officers argue that John has only himself to blame for his fate. They should not risk the army to save him. But Narses is close to John and thinks differently. If John treated your orders with insolence, most excellent Belisarius, he has already been punished enough, since it is now in your power to either save or abandon him to the enemy. But you must ensure that neither we nor the Emperor are also punished for his mistakes. For if the Goths capture Ariminum, it will be their good fortune to capture a capable Roman general, as well as an army and city subject to the Emperor. And the disaster will not stop there, but will affect the entire fortune of the war. As the council meets, a message arrives from John. His men are starving, and unless relieved, he must surrender in 7 days. It is agreed that an attempt must be made to rescue John and his troops. In an elaborate operation, 1,000 troops are left to cover the Goth garrison at Auximum.
One force will advance straight up the coastal road. Another force will move up by sea, threatening an amphibious landing, while Belisarius and Narses march inland and approach from the west. The plan works perfectly. Viticus receives reports of Roman forces closing in from all directions. Fearing encirclement, he abandons the siege and hurriedly withdraws to his capital, Ravenna. But despite their success, all is not well in the Roman camp. When Belisarius invites John to thank those who come to his rescue, John announces that his only debt is to Narses. His words fuel the growing distrust between Belisarius and Narses. In the words of Procopius, historian and eyewitness, from that time on, these two men began to regard each other with great suspicion. The chain of command among Eastern Roman generals is not always clear, and is rarely set in stone. Referring decisions back to the emperor takes months, so a general's authority may often rest on his ability to win over his senior officers. It's possible Justinian encourages such a system to hinder overmighty generals who attempted to challenge his rule. Is this why he has sent Narses to Italy to clip the wings of Belisarius? We don't know. But for the war in Italy, the consequences of this system will soon lead to catastrophe. John and other discontented officers begin to encourage Narses to oppose Belisarius. It is beneath his dignity, they tell him, to take orders from a mere general. When Belisarius reveals his plan to methodically eliminate the Goth strongholds in central Italy prior to an advance on Ravenna, Narses objects. The strategy is too cautious. Instead, Narses proposes an immediate advance into Aemilia to seize more territory from the Goths. In frustration, Belisarius produces a letter from the emperor. We have not sent our steward Narses to Italy in order to command the army. We wish Belisarius alone to command the whole army in whatever manner seems best to him. It is the duty of all to obey him in the interest of our republic. To which Narses replies, your strategy is not in the interest of the republic. The army splits into two factions, each pursuing its own strategy. A potentially disastrous situation, but fortunately for the Romans, one which Viticus in Ravenna fails to exploit. Belisarius is able to take Urbino when its well unexpectedly fails. Narses sends John to capture Forum Cornelii in Aemilia. But in the north, a storm is brewing. This city of Milan far surpasses all the cities of Italy in size and population and every other sort of prosperity. This city, I say, has fallen into great danger. The urgency of the moment does not allow me to use many words. But you, I say, must defend the people of Milan in their peril with all possible speed. If you hesitate to come to us in the present crisis, the result will be that we will perish, after suffering the most cruel fate possible. सर्दी खांसी का मुकाबला करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हनी टच हॉट सिक लिक्विड, जिसमें है तुलसी, जिंजर, अदुलसा और मुलेठी जैसे 15 हर्ब्स की जबरदस्त शक्ति। हनी टच हॉट सिक with power of 15 Ayurvedic herbs for relief from cough and cold. 539 AD. Milan is held by just 300 Roman troops and its citizen militia. The Goths have reacted swiftly to its loss, and the city is now besieged by Uraeus, the king's nephew. He is supported by a huge force of Burgundians, sent by Theodebert, king of the Franks, a Goth ally, though how far he can be trusted is anyone's guess. By winter, Milan is starving. Its people are eating mice and dogs. Belisarius, besieging Orvieto, orders a force to march to the city's aid. But when its commanders learn of the size of the Burgundian force,
They halt at the River Po and refuse to go further without support from John and his troops in Emilia. By now, John only obeys orders from Narses. By the time Belisarius has written to Narses and persuaded him of the urgency of the situation, it is too late. The garrison of Milan ignore their commander's plea to die like heroes and negotiate their own surrender, abandoning the civilians to their fate. Goths and Burgundians slaughter every male they can find in the city. Women and children are given to the Burgundians as slaves. One of the greatest cities in Italy is plundered and razed to the ground. The destruction of Milan is the direct consequence of a fatally divided Roman high command. Shocked into action, Justinian recalls Narses to Constantinople. Belisarius once more has sole, undisputed command in Italy. The northern part of the country has now been ravaged by 2 years of war, in which time no harvests are gathered. Vitiges cannot campaign without supplies and remains in Ravenna. Roman forces can be supplied by sea with grain from Sicily and the south. But in the countryside, Italian peasants begin to starve. I will now tell of the appearance they acquired and how they died, for I was an eyewitness. All of them first became lean and pale, for the flesh, lacking nourishment, turned on itself, to use the old expression. As the evil developed, all moisture left them, and the skin became so dry that it resembled leather more than anything else. They changed from a livid to a black color, whereupon they came to resemble burned-up torches. Their faces always wore an expression of amazement and a dreadful sort of insane stare. Procopius estimates that famine claims 50,000 lives in Picenum alone, with bodies left unburied and rumors of cannibalism. When King Theodebert himself suddenly leads a great Frankish army into northern Italy, attacking Goths and Romans alike, he finds he has entered a wasteland. His army, unable to find supplies and decimated by disease and dysentery, quickly withdraws back across the Alps. The war grinds on as Belisarius besieges the Goth strongholds at Faesulae and Auximum. Auximum is impregnable. Only starvation will force the Goths to give up. Skirmishes are fought in the surrounding hills, as each side ambushes the enemy's foraging parties. Belisarius is amazed by the Goths' determination. Eventually, he learns from a prisoner that one of his own men has been passing messages from Vitiges to the garrison, promising help, urging them to hold out a little longer. Belisarius arrests the traitor and sends him back to his unit for them to punish as they see fit. They burn him alive in full view of the enemy. The garrisons of Faesulae, then Auximum, are finally starved into surrender. Belisarius grants them both generous terms. Then, with his rear secure, he begins his advance on Ravenna. Reinforcements from Dalmatia approach from the north. Ravenna is protected by a lagoon, marshes and shoals along the coast. Parts of its 9-meter-high brick curtain wall can still be seen today, incorporated into later Venetian fortifications. It is strongly held. But the Roman noose is tightening. A vital grain shipment along the Po River is intercepted. A mysterious fire breaks out in the city's granary. The Goth king puts much hope in his nephew, Uraeus, approaching with a relief force of 4,000 men. But when the troops learn that their own strongholds have gone over to the Romans, they leave for home.
In despair, Vitiges agrees to open negotiations. Imperial envoys arrive from Constantinople, but the treaty they offer to Vitiges is so generous that Belisarius refuses to sign it, believing he's on the cusp of complete victory. Without Belisarius's endorsement, the Goths also regard the treaty with suspicion. Sidelining King Vitiges, Goth nobles send their own delegation to Belisarius with a secret offer to make him Emperor of the West if he will guarantee their security. Belisarius swears only that no harm will come to the Goths if they surrender. An oath to rule over the Goths he will swear later, before Vitiges himself. The Goth delegation is satisfied. What man would turn down the offer of a crown? The gates of the city are opened, and Belisarius marches into Ravenna at the head of his troops. He ensures grain arrives in the city quickly. Then he tells the Goth warriors, who outnumber the Romans, to disperse back to their homes. There is no plundering of private property and no violence. Belisarius has triumphed, but it will soon emerge he is not playing straight with the Goths. While I watched the entry of the Roman army into Ravenna at that time, it occurred to me that the outcome of events is determined not by the wisdom of men, nor any other virtue on their part, but that there is some supernatural power that is ever warping their intentions and leading them in such a way that nothing will hinder that which is being brought to pass. For though the Goths were greatly superior to their enemy in number and power, and had neither lost a great battle nor been humbled by any other disaster, still they were made captives by the weaker army, and regarded the name of slavery as no insult. The days pass. The Goths await an announcement from Belisarius that he will crown himself Emperor of the West and rule over them. It never comes. Belisarius has no intention of betraying the Emperor. He's allowed the Goths to think that he'll accept their offer, only to end the war as swiftly as possible. The Goths begin to feel they've been tricked, betrayed even. Suspicions which are confirmed when Belisarius is recalled to Constantinople. He leaves with the Goth treasury and his prisoners, including Vitiges. Belisarius's rivals ensure that Justinian hears all about the Goths' offer of an imperial throne. But for the moment, the Emperor faces a far greater concern. One of Vitiges' last acts as king had been to send 2 secret agents to the court of King Khosrow in far-off Persia, with a plea for aid against their shared enemy, the Eastern Roman Empire. Amazon Fresh Super Value Days. हर महीने first to 7th get super deals, super cashback, free delivery for Prime members. यानी super savings. Amazon Fresh Super Value Days. Khosrow needs no encouragement. He's been watching as Justinian strips his eastern frontier of troops for his wars in the west. Now Sasanian armies are on the march. His huge army marches along the banks of the Euphrates River. Sura falls before them. Hierapolis is ransomed for 2,000 pounds of silver. Berea burns. Then, to the horror of all Romans, Khosrow takes Antioch, second city of the empire, the Roman capital of the Near East. The city burns. Soldiers flee. Civilians are massacred. The historian Procopius writes, "I become dizzy as I write about such a great calamity, and transmit it to future times to remember. I cannot understand why it should be God's will to exalt the fortunes of a man or place, and then to obliterate them for no cause that is apparent to us."
After years of victories, Justinian's empire is rocked by this devastating onslaught. The emperor can send only his cousin Germanus and 300 soldiers, with a promise of a great army to follow. But there is no great army. Roman forces are tied down fighting Justinian's wars in the west. Instead, he will dispatch his greatest general, Belisarius, and pray for a miracle, little knowing that the empire is about to be plunged into an even greater catastrophe, unlike anything the world has ever seen before. Trouble had been brewing on Justinian's eastern frontier for years. The Eastern Roman and Sassanid empires, the two great powers of the Middle East, had signed a treaty of eternal peace just 8 years before. But Khosrow had looked on with growing alarm as Roman forces, led by Belisarius, had reconquered first North Africa, then Italy. Half in jest, Khosrow asks Justinian for his share of the tribute, since these victories are only possible because he's granted the Romans peace. But the joke is wearing thin. Khosrow receives envoys from the Goths in Italy and the Armenians, who beg him for aid. Justinian, they tell him, has conceived the desire of seizing the entire earth. He will march against the Persians with those he has already enslaved, respecting neither the name of friendship nor any of his sworn promises. In 540, Khosrow accuses the Eastern Emperor of paying Huns to raid Persian land and trying to bribe his Arab allies to switch sides. Then he attacks. Justinian has stripped the frontier of its best troops to reinforce his army in Italy. There is no Roman force that can stand up to Khosrow's invasion. Antioch is sacked. Survivors are enslaved and sent to Persia. Khosrow then marches to the coast and symbolically bathes in the waters of the Mediterranean. He moves on to Apamea, where he demands 1,000 pounds of silver, but lets the priests keep their piece of the true cross. He then fixes the local chariot race, so that Justinian's favourite team, the Blues, lose. Justinian agrees to pay Khosrow 5,000 pounds of gold, with 500 more to be paid annually, in exchange for a truce. Satisfied, Khosrow sets off for home. However, he does not let the truce prevent him from extorting several more payments en route. It is the Eastern Roman Empire's greatest military humiliation in 3 centuries. Everyone was talking about Belisarius. He was credited with 2 victories such as never before fallen to the lot of one man. He had brought 2 kings captive to Constantinople, and beyond all expectation had made Roman spoils of the nations and wealth of Geseric and Theodoric. In the Eastern Roman capital, Belisarius has been welcomed back from Italy as a hero. He and his entourage draw admiring crowds wherever they go. But he does not have long to enjoy his success. In early 541, Justinian sends Belisarius east to take command of Roman forces in Syria and ensure there is no repeat of the previous year's disaster. Belisarius' wife, Antonina, has accompanied him on previous campaigns to North Africa and Italy and proved herself a valuable advisor and deputy. But this time, she remains in Constantinople to advise her friend and patron, Empress Theodora. Belisarius gathers all available forces at Dara, site of his great victory 11 years before. He has his own household troops, the elite Bucellari, Ostrogoths who've joined him in Italy, Rome's Hassanid Arab allies, led by Al-Harith, and several thousand Limitani, the empire's frontier troops.
Procopius does not tell us the size of these forces, so we can only make educated guesses based on circumstantial evidence. Local Roman forces are shaken by the events of the previous year. Belisarius spends several weeks reorganizing these men, re-equipping them, and rebuilding their shattered morale. When Belisarius learns that Khosrow and the main Persian army are far away in the north, campaigning in Lazica, he decides to go on the offensive and targets the Persian city of Nisibis. This fortified frontier city is too strong to assault directly, but Belisarius hopes the garrison can be lured out and defeated in battle, allowing his troops to rush into the city, mingled with the retreating enemy. Belisarius camps 5 miles from Nisibis, close enough to tempt the Persians to attack, but far enough that they can't easily retreat back to the city. But one Roman commander, Peter, camps far too close. Worse, he ignores Belisarius' warning to be on high alert at noon, when the Persians are most likely to strike. The Persian commander, Nabides, spots this isolated Roman force and attacks. कार इंजिन अडवून पावसाळ्यासाठी एक काम कर, एलियन अटॅक कव्हरही ऍड कर आणि डायनोसॉर डॅमेज कव्हरही. डायनोसॉरने टक्कर मारली तर उद्या काय होईल कोणाला माहित. मोटर इन्शुरन्स मध्ये जबरदस्तीचे ॲडॉन्स. फोन पे वर तुम्हाला गरज असलेले ॲडॉन्स निवडा. फोन पे, टेन्शन फ्री इन्शुरन्स. Peter immediately sends a rider to Belisarius calling for aid. But Belisarius and the rest of the army have already seen what's happening and are on their way. Before they can reach Peter, his force is hit by the Persian cavalry. After a brief fight, his troops scatter. 50 men are killed. A Roman standard is lost. When Belisarius arrives with reinforcements, he drives off the Persians, who retreat into the city, leaving behind more than 100 dead. But the loss of a Roman standard in such a pointless skirmish is a bitter blow. Belisarius marches on to the Persian fort at Caesarion. His first attack is repelled. He digs in for a siege, while ordering Al-Harith's Arabs and 1,200 Bukilari to cross the Tigris River and raid deep into Assyria. It has been many years since the Romans have raided this far into Persian territory. There is little resistance and much plunder. Caesarion runs out of food and surrenders to Belisarius. But the Roman general has run out of time. His troops are exhausted by the extreme summer heat, and a third are sick. His Limitani wish to return to their homes, now threatened by the start of the Arab raiding season. While Al-Harith and his men have gone AWOL, it later emerges they've ridden straight home to avoid sharing their loot with the Romans. Belisarius, having achieved as much as he can with his limited force, withdraws back into Roman territory. At the opening of spring, Khosrow, son of Kavad, for the 3rd time began an invasion into the land of the Romans with a large army, keeping the Euphrates River on the right. The Emperor Justinian, upon learning of the inroad of the Persians, sent Belisarius against them once more. 542 AD. Belisarius spends the winter in Constantinople, but in early spring, news arrives that Khosrow is preparing to invade again. Belisarius races back to the Eastern Front, using horses of the famous Cursus Publicus, the Roman postal service, with fresh remounts at every stage. A journey that normally takes a month can be completed in around 8 days. Local commanders warn that Khosrow is approaching with the biggest army yet. They want to hole up in Hierapolis
and hide behind its strong walls. Belisarius has a different plan. If Khosrow were attacking any other people but Romans, this plan of yours would be safe and sensible. But as immediately after leaving here, this barbarian plans to fall upon some other territory of the Emperor, be assured that to die bravely would be better in every way than to be saved without a fight. For this would justly be called not salvation, but treason. So come as quickly as possible to Europos, where, after collecting the whole army, I hope to deal with the enemy as God permits. Khosrow is counting on another lucrative plundering expedition. This time he plans to raid Palestine and pillage Jerusalem. But when he hears Belisarius himself has arrived and is gathering a Roman army at Europos, he hesitates. He sends an envoy, Abandanes, to meet Belisarius on the pretext of reopening negotiations, but really to gauge his strength. For almost the first time in 10 years, Procopius is not at Belisarius' side. He has remained in Constantinople. In fact, his days of campaigning with the great Roman general are over. Nonetheless, he provides a detailed description of what follows. Belisarius meets Khosrow's envoy far from the Roman camp, surrounded by an imposing number of his most fearsome warriors, including Thracians, Illyrians, Goths, and Vandals. They have been hand-picked to make an impression. All are tall, strongly built men, armed to the teeth, and seem completely unconcerned by the arrival of a Persian envoy. Belisarius himself speaks in a carefree manner. This course that Khosrow has chosen is not how men usually behave. If other men have a dispute with their neighbor, they first try to negotiate with him, and only go to war if they do not receive satisfaction. But he first comes into the midst of the Romans, and then makes suggestions about peace. With that, Belisarius dismisses the envoy. The envoy returns to Khosrow, and urges the king to avoid battle at all costs. The enemy are not like any men he's seen before. They are formidable and disciplined. Their commander is wise and imposing. The king should withdraw as soon as possible. Khosrow takes his advice. The Persian army crosses the Euphrates and marches home. Belisarius appears to have bluffed a stronger enemy into retreat and saved huge swathes of the empire from plunder and pillage. According to Procopius, the Romans praised Belisarius. He seemed to have achieved greater glory in their eyes by this feat than when he brought Gelimer or Viticus captive to Constantinople. In truth, it was an achievement of great importance and deserving great praise, at a time when all the Romans were hiding in terror behind their defenses. Belisarius and his Bucellari, putting on a show that is so intimidating and deceptive that the Persian king abandons his campaign. It's a famous and memorable scene. But did it ever happen? Many historians believe that something even more terrifying caused Khosrow's rapid withdrawal. He discovered the empire was riddled with plague. During these times, there was a pestilence which came close to wiping out the whole of mankind. Now, in the case of all other scourges sent from heaven, some explanation or cause might be given by daring men. But for this calamity, it is quite impossible either to express in words or to conceive in thought any explanation, except indeed to refer it to God. The 6th century world is full of strange and mysterious phenomena. Sometimes even a highly educated man like Procopius can only record his observations and trust in God. Of the year 536, he wrote, "It came about during this year that a most dread portent took place.
The whole year, the sun gave forth its light without brightness, like the moon, and it seemed much like an eclipse, for its beams were not clear, nor like those it usually makes. From the time when this thing happened, men were free neither from war, nor pestilence, nor any other thing that brings death. Let's go. Let's go live. Don't rush me. जाओ पहले कभी भी find it. इसका sign पता नहीं क्यों तो ये होता है. ऐसे होता है. Wish I'd known this पहले से. You want to be sure before you apply? With over 5 million authentic ratings and reviews on Naukri, be sure about the job. Experts now believe Procopius was observing the atmospheric aftermath of a massive volcanic eruption. In fact, a cluster of volcanic activity around this date would help to trigger what's become known as the Late Antique Little Ice Age. Its impact is impossible to measure, but it may have contributed to food shortages and worsened the famine that Procopius witnessed in Italy. Such shortages made the population weaker and more vulnerable to what came next. It originated among the Egyptians who live in Greece. From there, it branched out in two directions. The first moving to Alexandria, then the rest of Egypt. The second coming to the Palestinians, who lived by the border of Egypt. You want that? Plague is first recorded in the Nile Delta in 541. It spreads across Egypt and into coastal Palestine. In spring 542, it reaches the imperial capital, Constantinople. It spreads rapidly across the empire. In 543, plague reaches Persian-ruled Armenia and the kingdom of France. Recently, plague victims have even been identified in Anglo-Saxon England. Procopius is in Constantinople when the plague strikes with full terrifying force. They fell ill in the following way. Suddenly they became feverish. Some of them when they rose from sleep, others while they walked about or doing any small thing. The body did not change colour or become warm like a regular fever. Rather, at first, the fever was so mild that it gave no cause for alarm, either to victims or the doctors who treated them. On the same day or a bubonic swelling appeared. This happened around the groin, also inside the armpit, sometimes by the ears or the thigh. Some victims, Procopius
यो 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 यो, ये लौंडे तो 10 मिनट लगाएंगे। हम दोनों सबसे पहले आ गए। जिसने बुलाया था वो नहीं आया। मल्टी लगा दे, पब्लिक वाला लगा दे सब लगा कुछ। कहाँ चले गए सब? क्या हो गया भाई? पता नहीं भाई, कुछ आवाज आनी बंद हो गई थी सब कुछ। रुकवाको की पार्टी ज्वाइन करते हैं। मेरे को तो कर दिया। ओके, वाको तो ज्वाइन कर पा रहा हूँ, वाको को पता नहीं क्या इशू हो रहा है। वाको शायद अभी आया नहीं है, सिर्फ गेम ऑन किया उसने। बकवास की पता है। Oh, supposed to grab it.
ये लॉन्डो का भी 9 वगैरह कैसे आता है? तो पूरी क्लैन ही लग रही है मेरे को। कैसे आता है? 9 पिंग कैसे आता है? 9 इतना क्यों रहता है सर्वर गेम में? अबे ये कौन सी बिल्डिंग निकली है मेरी? इनको को गन चेंज करनी है, मैं कुछ और ही निकाल दिया मैंने तो। स्वेट बंदे हैं लग रहा है। मैं होल्ड कर रहा हूँ, मेरे को जीतनी है गेम। फेल दिया मेरे को। ये तो पिटाई कर रहे हैं। सामने स्नाइपर बैठा हुआ है, मेरे पास स्नाइपिंग गन नहीं है। रुक, मैंने किसी की उठाई है, देखता हूँ मैं। एक बंदा पेल के मैंने अपनी गन वापस उठा ली। अरे उतर गया मैं भी। देख के बैठे हैं वो मादर चोट उधर। पॉकेट मेरे को वो स्नाइपर वापस। मैंने थोड़ी देर में तो होल्ड कर लिया उसको। हाँ जी। Got your back. Check fire. Location updated. Capture the hard point. Reloading. अबे ये वाला बहुत मुश्किल है होल्ड करना, वो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे। अबे सामने बैठा हुआ है वो, चिकारी बना रहा है। दिखाई नहीं रहा साला। प्रिसीजन मार दी। फेल दिया क्रूज मिसाइल आ रही है भाई। बहुत बंदे मरे उससे, काफी मौत। Hostile UAV in the area. पड़ गया मैं। काफी ज्यादा होल्ड किया उसने। हाँ काफी देर होल्ड कर रहा हूँ। चलो ऑफिस में बैठ के छक्का भोगड़ी वाला। Hostile cluster mine active. ऑफिस में बैठा था। अच्छा नहीं, तो सामने ही है। मैं लेटा हूँ ऊपर। ट्रॉफी लगा रखी है। अरे ट्रॉफी ये लोग हमेशा लगाते रहते हैं बेंचों इस मोड में तो। Flash out. Watch your fire. I'm reloading. Hardpoint relocating. Stand by. Didn't see me coming, did ya? अबे बेंचों ग्रेनेड फेंक दिया था, मैंने देखा ही नहीं। Target area updated. Move to the hard point. चल गया मैं रास्ते में जाते हुए। Got your back. मैं अकेले होल्ड कर रहा हूँ अभी तक। मेरे को तो पता है पिक्सल बना दिया इसने। हाँ वही नहीं, ये पता नहीं क्या है, इसकी स्किन वगैरह है। मजाक चल रहा है। Confirming next hard point. Stand by. Surprise, cabron. अबे भूसड़ी के मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया तुमने। उसको मारने लगा था। पीछे से आया। पेल देते हैं। You're halfway to mission complete. Stay sharp. तुम बहुत आ गए इनसे। गेम से ये तो करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे लगा था बंदे मार रहे हैं। ओ भाई ये बीआर भी खेल रहा। कौन बीआर खेल रहा है? बीआर भी इसका नाम है। अच्छा
Surprise, cabron! Locating the next hard point. Get ready. मैंने क्यों लगा रखी है? अबे दो लगा बंदे रहे थे। Area updated. Move to the hard point. अबे अगर वन शॉट वन किल ना मिले फिर तो भाई कोई चांस ही नहीं रहता इस गन के साथ, एसपीआर के साथ। हाय दिखा नहीं पर Hardpoint relocating. Stand by. Stun incoming! Coming, did ya? Check fire! We're back! Location updated. Capture the hardpoint. Approaching from the rear. Personnel at the hardpoint. Recon flyover. UAV online. जब उस बंदे ने मेरे को फ्लैश होके पेल दिया। Linda, got one. Swapping mags. जो ट्रॉफी है यहाँ पे कहीं पे ये। ओके चल। अली कन्फेटी बना रहे हैं हमारे। Locating the next hard point. Get ready. Oh no. I hope ये हमारी है। क्योंकि मैं फेस में भाग गया। Enemies inside the perimeter. Area updated. We've got him on the run. Keep it up. Grenade out. Enemy UAV active. छक्का साला अपने बेस में बैठा। Our UAV is orbiting the area. Enemy personnel at the hard point. Hostile cluster bomb destroyed. Fight ahead. Throwing flash grenade. Hardpoint relocating. Stand by. खत्म तो ही है। Location updated. एक को तो फिनिशिंग दे दिया मैं मैंने। जैसे ही आया खत्म हो गया। They tagged me. अच्छा क्या? Hardpoint compromised. Secure the area. Got one. Flash incoming. Changing back. You didn't see me coming, did ya? Contact. Surprise control. Hardpoint compromised. Secure the area. Enemies inside the perimeter. Next hardpoint. Stand by. Easy victory. Mission complete. Easy victory. Solid work. استانس يا اخي الشرموطه मैं 3 मिनट उस पे बैठा और कुछ قسمك على امك वाको ने मेरी क्लिप बना के भेजी है। जब उस बंदे ने मेरे को फ्लैश होके पेल दिया। लो आया नहीं है। जो ट्रॉफी है यहाँ
इनवाइट डाला तो है मैंने। बोल रहे एक और मल्टी खेल लो। कह रहे एक और मल्टी खेल लो। हम दो वर्सेस ये 5 है क्या? क्या कह रहे हो? 4v4 है क्या ये? शिपमेंट 6v6 होना चाहिए। पता नहीं से अब 6v6 हो गया। माउंटेड किल्स चाहिए मेरे को अब। चलो वो करेंगे। फास्ट एंड स्टार्टिंग में देना चाहिए इनको यार, उसके बिना मजा नहीं आता। क्या पॉइंट है? Domination. Enemy securing Bravo. Throwing stun incoming. Changing mags. We are taking. Oh fuck. Alpha. Fire. Alpha secure. Confirmed. Secure Bravo. इसमें जो बी रहेगा ना वही जीतता है। लॉल। Usually B is the main factor in this. बी ले रहे ये। बी लेने में दबा के चलता है। मैं भी ले रहा हूँ बट अकेले नहीं ले पाऊंगा, कोई आके पेल देगा। ओह एग्जैक्टली, किसी ने आके पेल दिया बेंचो। एक को पहले वहीं स्पॉन कर देते हैं उसको भी। बेंचो वो लोग भी ले लेंगे। UAV online. Enemy UAV overhead. ऑलमोस्ट ले लिया अभी। बेंचो ऑलमोस्ट ले लिया था। ले हक दिया मैंने। बढ़िया। Hardline activated. Hostile mortar strike in the area. मेरे को माउंटेड किल्स चाहिए। भाग दिया। व्हाट? मेरा ग्रेनेड मेरे को मार दिया। भाई ब्रावो। अल्फा भी जा रहा है। मादर चोद। ये जाम हो गया तुम्हारा बंदा। भाग दिया। चार्ली। लौड़े।
How am I alive? दो थे वहाँ पे. Catch this. Grenade out! Guts off the floor! Headshot. Strike near your position. Fucker. Bravo, bravo, bravo. Multiple में push कर रहे हैं. नहीं पीछे कैसे कर दिया इसको? हाँ दिया भाई कितने बंदे मार रहे हैं इस लाइन में. अंधा नंगा सब कर दिया. बेंचू ब्रावो कैसे ले वापस? Hostiles launched an SAE. No 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 पास हो गया. हाँ चल मेरे पास ही. पीछे होने वाले हैं. चाली पे टेंशन दिया ब्रावो ले लो. तो फक जाएगा चिल्ला जाएगा. ये हार्डी के बाद बहुत सही है. लाशों की बौछार गिर रही है चाली में. मैं अपने के मेट से मर गया. बिटो गुड राइट. यस खेल दिया चूतिया बस. अरे भाई यार कैसे ले गए वो. fuck man. पानी पीते रहते हैं. भाई कोई डिटेल मंगवाओ यार बीटा के लिए. ट्रॉफी लगा के बैठे सर के. चार्ली रखते हैं हम लोग. बट क्लेमोर वगैरह लगा के बैठे भाई. नहीं उसको मार दिया होगा. अरे भाई ये क्या मेरे स्पॉन होते मिल रहा हूँ. डोमिनेट करेंगे बोल दिया. ये तो भाई लेने नहीं दे रहे. कुछ करना पड़ेगा. कैसे मार दिया इसको मैंने. नहीं चार्ली पे था यार. चार्ली होता
हार रहे हैं भाई मैं अल्फा डिफेंड कर रहा हूँ। अभी तो कैसे कर रहे हो अभी तो बहुत दूर पढ़ाई हो रही है। हाँ वो लोग पे पास है। तो चार्ली का ट्राई मार रहा हूँ। वो लोग अल्फा भी पुश कर रहे हैं। ब्रावो ले लो मैं चार्ली को जा रहा हूँ। मैं भी चार्ली पे हूँ। ये अल्फा डिफेंड कर रहा है। चार्ली मिल गया। अल्फा में डिफेंड कर रहा हूँ। चार्ली ले रहे हैं। चार्ली वापस ले रहे हैं। देखो हर जगह ट्रॉफी सिस्टम है, हर जगह कुछ फेंक ही नहीं सकते। इनकी फट रही है, ऐसे चलता रहेगा बीच जाएंगे। अरे अल्फा ले वो पूरा अल्फा ले लिया उन्होंने। तो लौड़ो यहाँ से। मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं यार अल्फो कोई नहीं। बढ़िया क्यों रोका मैंने यार गोली चलाना। राहुल ले रहे हैं ना, सब हो गया। कैसे ले रहे हैं? मैं अल्फा ले रहा हूँ। दूसरा भाई लेने मत दो ब्रावो। किसी ने आके फेल किया मेरे को। अरे ब्रावो ले लिया यार इन्होंने, 3 हो गया। ब्रावो डिफेंड करना था। अल्फा अल्फा पे बैठे हैं यार, कितने सारे बैठे हैं भाई। मैंने पूरा ले लिया। हाँ ब्रावो ले लो। अरे आरपीजी लेके आ गया हिजड़ा। मैं फिनिशर देने आया था, हेडशॉट नहीं हो पाया। घूम गया। कहाँ छोड़ रहे थे? पीछे से आ गए। मैं जिसको फिनिशर दे रहा था किसी ने फेल दिया। हार मान जाएंगे। अरे नहीं ब्रावो। अबे भोसड़ी के आगे से हटना। हमें चार्ली लेना पड़ेगा और ब्रावो में लेना पड़ेगा। तो कंटेस्टेड कैसे है भाई? ब्रावो में कुछ चालू तो ना कर रहा था इन्होंने। सारा चार्ली डिफेंड कर रहे हैं। हैंड शो ग्रुप तेरे को मारूंगा। ब्रावो ले लिया। We are almost done, bro. We are almost done. हो गया But अभी भी close है। Oh भाई, holy shit. That was intense. थोड़ा सा डॉग फूड थोड़ा सा ही दिया। मतलब जितना यूजली होता है उसका 3/4 और देना होगा। आज पिएगा? नहीं Yo bro, क्या लगाना बोल रहे हैं?
Check your gear and weapons. We go soon. Hostiles dropping into the area. Watch the side. Drop the sniper! Taking effective fire! Preparation is done. Now you deploy to the war zone. क्या टट्टी कर रहे भाई ले आए एक उधर आया I wanna kill your friend. I wanna kill your friend. Dick ना एक हमारे ऊपर यार I don't have any guns. मेरे पीछे आ रहा है वन शॉट है यार ये मेरे को हाँ मैंने उसको चिल्लाया अरे तुम्हारी आवाज नहीं आई SMG दिखे तो बताना क्या बोल रहा है SMG और थे ना बंदे आसपास कनेक्ट मार किया बढ़िया ओके मैंने पूरी ट्रेन लूट ली मेरे पास तुम दोनों के लिए वेस्ट्स हैं हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में यूएवी में बंद ऑपोजिट नहीं ब्रिज के क्रॉस द ब्रिज हां ब्रिज के क्रॉस पास में लाइक नॉट सो फार अवे ये वाले घर मैं दूसरी तरफ से पुश कर रहा हूँ मेरे से 250 मीटर दूर है स्नाइपर SMG है प्रिसीजन कर सकता हूँ वेट का अभी तक उनका लोकेशन कोई लैंड ही है क्या अपने पास
वेस्ट सर देखिए वेस्ट चाहिए इंजन में लीक है दोनों के लिए I've needed it. मैं गिरा रहा हूँ एकदम पुश कर देते हैं मैं छत पे जा रहा हूँ एनिमी ड्रॉपिंग ये रहा पीछे अब ये एक बंदा लैंड किया पीछे उस बिल्डिंग के पीछे है उसको पुश कर रहे हो क्या मैं इधर आ गया था रास्ता भाई वो पीछे से पेल देगा अगर हम नहीं जाएंगे तो जाना तो अपने को जोन में ही है मेरे सामने बहुत बढ़िया ब्रो Move to the safe zone. और जल्दी भाग वो मीडियम बैकपैक रैंडमली तो मैं उधर जा रहा हूँ आइटम्स तो है नहीं मेरे पास बैकपैक मिल गया है खाली एकदम मेरे को इतना बुलेट्स चाहिए we had time कहाँ गए लौंडे आ रहा हूँ मैं तो कोई नहीं दिख रहा ये रहे गाड़ी चालू कर दी उसने गाड़ी लेके भागने का प्लान है इनका तीनों के तीनों गाड़ी से आएंगे एडीएस करके बैठो टट्टी गाड़ी फोड़ देंगे हम एक बहुत ही तो कूद गया नीचे मेरे को फ्लैश कर दिया भाई मेरी गोली क्यों नहीं हो रही थी इसको एक बार बचा है ब्रिज के नीचे तीन थे टोटल 3 थे 2 मारे ना हाँ 2 ही मारे अभी तो एक है एक कूदा था गाड़ी में से पहले कूद गया था वो लोग रनवे पे जा रहे हैं ऑलरेडी इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया पानी तो पूरा पानी का जोन है ब्रो मेरा पिस्टल फॉर दिस स्वम करना शुरू करें कहां पे that's you man that's you इधर से स्वम करते हैं वेट का जोन बदलने देना लेट्स जस्ट ओके you're right most probably we have to move there हेलीकॉप्टर है ऑलरेडी रनवे पे तो मतलब एक स्क्वाड तो है जिनसे लड़ना पड़ेगा Gas is closing. Get to the new. you don't have to move there no you don't have to move ये बंदा है एक से ज्यादा है क्या हाँ ज्यादा बंदे डाउन करे बट आई डिडंट गेट द किल चलो कहां पे वो भैंचोद उसको कोई और आ गया अरे प्रेशर मार दी अरे पकड़ा ले ओए हेलीकॉप्टर बैठ के मार रहे हैं छक्के मेरे को देखो कैसा फकिंग डेड भाई मेरे को तोड़ दिया उसने सब ब्रोकन हेलीकॉप्टर पहले यार उनको मैं दो बंदे कूदे हैं सारे कूद गए ओ फक ये रहा दिख रहा नहीं करा प्लेट अप नहीं करा बहुत देर से Loadout drop headed your way. ये Incoming. बंदा लैंड कर रहा है भाई एक सेकंड की कंफर्म किल चाहिए मेरे को प्लेट चाहिए किसी अच्छा प्लेट है हां प्लेट है मेरे पास बंदा लैंड किया यहाँ वाले रेड है बंदा लैंड किया लोड पे क्या कर रहा है यार मारो ये 2 बंदे पीछे
Fuck man, I got no plates, nothing. I'm still fighting alone. पर पीछे दो बंदे हैं। मैंने 6 प्लेट्स डाली हैं यहाँ Thank you, thank you. बंदा आ गया। वीक वीक। क्या कर रहा है भाई? अबे यार मैं वो एक इंटरफेस खुल गया था, बंद नहीं हो रहा था। थैंक्स। मेंशन किया है। पीछे वाले बंदे होंगे। उसको ब्रिज से पड़ रही थी। पंगे लेके मतलब नहीं है। मेरी एमो थी वो। ले लिया मेरे से यार। तो प्लेट चाहिए था इसलिए। कुछ नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। ट्रक आ गई फुल टीम के साथ। ट्रक फट गई। लॉल इनका चूतिया कटा करो। मारो 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 3 बंदे। ये भाई यार कितनी बड़ी ट्रक आई है। हाँ मतलब ट्रक तो दिख रहा था, बंदे नहीं दिख रहे थे। बंदे सब यही कर रहे थे जहाँ ट्रक के साथ पानी मिल गया। एक सेल्फ हो रहा है, टीम नहीं मिला। कहाँ हो रहे? पता नहीं हो रहा होगा जिसमें टीम नहीं मिला। काम डाउन हाँ टीम वाइप नहीं मिला। पानी के अंदर लेट है। पानी के अंदर कोई नहीं दिख रहा मेरे को। भागा है वो, भागा है। मेरे टीम में मिलना चाहिए था। और उनके एक I would recommend यहाँ पर आ जाओ सारे, ठीक है? नहीं तो हम बहुत बीच में लड़ाई कर रहे हैं। पीछे किधर आपको? टीम वाइप मिल गया यही था। मुझे ये बस समझ गया। क्या ले जाएगा घूम रहा हूँ। शॉटगन के पेट ही नहीं उठाया रे। लेटे होंगे इधर भी। एक क्लियर कर रहा हूँ सर तो टैक्स कर रहा है। जहाँ पैनल लोडर गिरा था वहाँ पर बंदे थे। सबको निकल कर आना है, सबको निकल कर आना है। लास्ट वाली बिल्डिंग में नहीं आना। मुझे अभी भी लग रहा है कि पानी से बंदे आ रहे होंगे। मेरे को भी फीलिंग सी है। एकदम से प्रकट होंगे, गान मार देंगे। एक तो थर्मल में पंछी दिखते हैं, गांड फट जाती है। पानी में भी दिखती है। ड्रॉपिंग इनटू द एयर। लोड आउट पे गया होगा। मेरे को राइट से आया, लेट पास में। ओ भाई थैंक यू। बढ़िया ना ये ऑलमोस्ट। हाँ सब खुले जमीन से आ रहा हूँ। पीछे कोई मार रहा था, so he was running away from someone, so be careful. I think he was getting beamed. ये लोड की तरफ बंदा पुश कर रहा है एक। आने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को नहीं दिख रहा। यहाँ पे था। पूरा मार्क करे, लाइव मार्क। सीधी में लाइव मार्क हो गया। ब्रेक कर दिया उसको। वन शॉट है। एक गोली मार दे। दिखना बंद हो गया मेरे को। क्या मार दिया उसको किसी और ने। ओके। Falling back a little bit, we are still at the center. Shadows में रहा। Where I don't want to get the loadout out of our sight. I'm sure कोई ना कोई वहाँ पे आएगा। That's camping and you'll die for that. Usually. Karma bro, karma. ओए पड़ रही मेरे को। ब्रिज के टॉप से फक मैंने गिरा दिया वो लड़के ने। How is he dealing like that? मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। भाई बहुत बुरा मिल गया उसने मेरे को। प्लेट से एक्स्ट्रा। हाँ लाइव मार्क कहाँ पर है? ठीक है बंदा। मैंने मार्क करी। अबे भोसड़ी के प्लेट्स तेरे पीछे। घास में कहाँ दिखेगी भाई वो छोटी सी। मैं अपना पीछे। कितने 4 ही टीमें बची हैं। एक तो ब्रिज पे बैठी है, पता नहीं क्या बींग कर रहे हो। ये बंदा लोड आउट पे बंदा है। somebody sniper. Let him be. I don't have no sniper. Get a clear shot. I wouldn't give you a position away at this point. I'm not. लोड आउट पे लेटा हुआ है। मेरे राइट में बंदे हैं।
तेरे राइट पे आ रहा हूँ। कितना राइट पे? मेरे राइट हैंड से नॉट क्लोज राइट, ठीक है? अच्छा उधर। के पास है, तो तुमको लोड आउट पे तो बंदा दिख ही रहा है। लोड आउट वाला पीछे चला गया। पानी का भी ध्यान रखना है ये। कहाँ पे कुछ मार्क स्मोक है यहाँ पे, स्मोक है यहाँ पे। मैं प्रिसीजन करने लगूंगा वहाँ पे। लेफ्ट से इनको रोटेट करने का है। Oh, broken, somebody broken. Still left, okay, I'll let you guys know, okay? हाँ, मैं पीछे थोड़ा कवर में जा रहा हूँ। क्योंकि बस आर्मर बॉक्स तो नहीं पड़ा हुआ ना? नहीं नहीं, मेरे पास वैसे तो है 6-7 प्लेट्स। 3 डे बची थर्ड पार्टी करने का अपने को। 7 बंदे, 3-3-1 के, फिर 3-2-3। खुले में है कहीं पे लोग भी। मेरे राइट में मोटा मार दिया मेरे को। Trying to find। और क्या किया? कहाँ तक आती है यार ये मोटा? कुछ भी है ना? सिंपल में लगा दिया तुमने, सिंपल है। एक को डाउन किया रीजन से। एक वन शॉट है। क्या बात है guys, that's why this thermal scope, जब से कोहली ने बोला वैको use the thermal scope, I've been using that shit and smoking my ass and killing them. Dude, I'm smoking through this just to value। कौन सा वाला? ऑरेंज वाला? हाँ ऑरेंज वाला। स्मोक के थ्रू दिखता है वो। बढ़िया, बहुत आसान। वैसे यूजुअली इरिटेटिंग लगता है मेरे को। सर्वाइवर दिया मेरे को क्या एक्चुअली है। तो किलर मिलना चाहिए था। एवेंजर। कोई थी। अरे ये सिंपल है, यार निकल यहाँ से। Another main menu. क्या बात हुई? बैटिंग आया क्या? कल तो खेल रहा हूँ
Holding for deployment. Take this time to warm up. सब म्यूट हो जाते हैं। Practice is over. The real fight begins now. चलो कैसे खेलना है? दूसरे play for the win, play for the win. I don't know how to do that, bro. I guess just Go for the hero, man. fights Go for the sake of fights. I'll meet you. Let's go on the Oasis. Yeah, I'm going to the Oasis. most वाले उठा लो। Exactly. Take the helo and do the most versus मैं और Borges Tarak में गिर That's actually smart, yeah. Do the most wanted. The most wanted. Yeah, you take the most wanted, okay. I wouldn't go for that most wanted maybe because. मैं तो most wanted में सीधा यार सीधा most wanted यार बंदा है यहाँ पे यहाँ पे पूरा इंतज़ार कर लेगा। मैं पिक कर लूँगा सीधे most wanted में। Where कर रहे? And we should do stronghold basically, you know, so that we can get a load out off rip. उन्हीं ने चालू कर दिया मैं तो क्रेनेक्स के पास जाने वाला था। ये क्रेनेक्स ही है। भाई अरे तेरे पे लैंड कर रहा है बंदा। ओके 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 ओके। ओपन में एक क्रेन क्रैश हो जाता है। मैं हाँ तारक आ गया। मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा दूर है। चल कौन सा लूट लग रही? Yeah, I don't think anyone. कोई नहीं आसपास। ओके। क्रैश नहीं करना है दूसरों में। दूर है मेरे से। ये ओएसिस में कहाँ पे होता है लूट क्रैश? ये वाला एक यहाँ पे एक दिख रहा है और एक यहाँ पे। एक पानी में जो मैंने मार्क किया वहाँ दो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली जहाँ मैंने मार के वहाँ दो है पानी के अंदर और एक पानी के नहीं पानी के बाहर है और पानी के अंदर like, पानी बाहर के यहाँ पे exactly like inside the water but it's closer to the shore। हाँ वो तो मेरे को मिल गया। और इधर पानी के अंदर और इधर जस्ट पानी के बाहर। हो गया मोस्ट वांटेड तो बाय वे। So I'm hoping that the stronghold building will activate in 10 seconds. That this is the building. तो गन तो ले लेंगे। मेरे पास 2 LMGs हैं और जमीन पे 2 और
Positive ID on multiple strongholds. DV2 Unmarked on your attack map. एक्टिवेट हो गया? Squad mate alive. Most wanted contract complete. इधर चल ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा तो मजे आ जाएंगे। नहीं है गाड़ी आ रही है। हाँ गाड़ी आ रही, गाड़ी पुश कर गई। गाड़ी तो खतरनाक पुश कर गया ये लौंडा। अरे फुल टीम है। फुल टीम चलो सालों को। क्या देख रहा हूँ? ये कैसी यूट्यूब पॉप करी तूने? तुम पुश कर रहे हो ना, तो मैं सैंडविच करूँगा। फ्लैश हो। मैं पुलन को रिवाइव करने जा रहा हूँ। I don't have a good gun, man. यार ये बंदा था, और किस पिकअप चाहिए मेरे को? नहीं गया हेलीकॉप्टर पीछे। I'm dead. Be advised, you have teammates outside the कितने मामले एक भी नहीं मारा? Find me now. मेरा ढंग से लैंड करा रहा है। मैं फाइट ले रहा हूँ। Fuck man, these guys they don't miss their shots and I'm dead. Man, fuck this एक को तो खा गया मैं। They'll fight for a chance to redeploy. Your squad mate has entered the gulag. Providing their emergency deployment. यार दो मार दिए थे। Second I need comms. You're up next. Your squad mate was broken. They are no longer with us. मैं मर गया। कर लो बात। क्या कर रहा था वर्गीज बेंचो? भाई मैंने दो मार दिए होंगे। एक रिवाइव भी हो गया, मेरे फालतू में किल गया वो। बहुत पुलन से कुछ बोल क्या कर रहा था। क्या तो अनफॉर्चुनेट स्टार्ट करो। Your squad mate has failed. They are returning to base. मैं तो किसी और को स्पेक्टेट कर रहा हूँ। Soldiers, you failed in life, but I offer you redemption in death. Kill for clock is ticking. Time to kill. This is our let's be friends man। दोनों पीछे। दोनों यहाँ पर। वन शॉट है। दोनों वन शॉट है। Suck on this cabron। क्या? पीली करते दूसरा डैमेज है। Finish the job. No way, this game is bullshit. मेरे पीछे क्यों आ रहा है ये? नहीं यार हक दिया मैंने। तो बहुत मारा था उसको मैंने, पता नहीं क्या सीन है। Enemy took that one. We'll be back to finish the job. जॉन विक पता नहीं किसको स्पेक्टेट गूगली को स्पेक्टेट कर रहा।
Warm up while you can. We will deploy soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. गधा का नाम गधा है। कहाँ हो रहा है? Warm up is over. Stand by for deployment to the war zone. Enemy soldier incoming. ट्रक ट्रक जरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्डिंग नहीं है शायद। और इसके अंदर पैसे भी नहीं थे एटलीस्ट झंडे है क्या? अगर फ्लैग झंडे तो थे तो मिलना चाहिए। and it was locked. It was like you couldn't access it before it. So once the event started, it access किया, then जो boxes नहीं मिले. I searched the entire fucking building, bro. Avoid the gas. Get to the safe zone. बहुत लोग पूरी दुनिया यही कर रही है वेंचर पार्टी होने वाली है। राइट वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया अभी। मैं बाउंड्री कर रहा हूं। Hunt the enemy down. गन दे दो एक बस। मेरे को फैनिक मिल गई। पैसा भी मिल गया। वेस्ट में कहाँ पे बंदे? एक तो ये है बाउंटी। पुश करना तो बताया मैंने SMG। I have 2 ARs. SMG. I have an SMG and an AR. सही तो आगे जाया जा रहा है। पता है क्या? और बंदे लैंड कर रहे हैं उधर अभी जस्ट। कोली पुलिन का पैसे जल्दी ले एंड बाय फॉरगेट इट टू ले। यहीं पे है ओक दबाऊंगा। मेरे सामने दोस्त नहीं है। बदल भी आ रहा है। डाउन है। मेरा भी डाउन है। मैं तो पहले दिया। मेरे को लगा इंटरोगेट करोगे। तो तीसरा और चौथे का पता नहीं था ना। I wasn't sure. ये बिग स्पॉट we need to get there. कहाँ पे? पीछे लाइक टुवर्ड्स टारक। चलो मेरे को थोड़े से पैसे गिराना। अच्छा हो गया। बंदा गिर रहा था शायद से अभी पीछे। मेरे को बाइक वो मेरे को मार रहा है। ब्रोकन है। डाउन है। डेड है। आई नीड प्लेट्स। एनीवन हैज प्लेट्स? 0 ये आगे एक और वाइप आ गया। दो है। मेरे को दोनों मिलके मार रहे हैं। इसका टैग। I got no plates, I got no plates। दो है। पूरा स्क्वाड है। I got no plates, I got no। मेरे पास भी नहीं है। ये दोनों कहाँ गए? मेरे को तो ग्रेनेड से गिरा दिया। ये ले। I got no fucking bullets, man. I need a new gun now. On your feet, soldier. एक बंदा डाउन है मेरे पोजीशन। बढ़िया। Get a new gun.
क्या कर रहे हो? नहीं नहीं करने देंगे भाई वो। I've got my RPK. पहलो प्लेट चाहिए था मेरे को एक्स्ट्रा है और स्मोक्स नहीं है मेरे पास। प्लेट्स है प्लेट्स बंदे का है प्लेट्स हाँ दो दे सकता हूँ। ये ले पर इसके अंदर बंदा बी केयरफुल राइट ना फ्लैंक कर दे हैं। ये और भी बड़ी है। एक प्लेट बना है राइट जा रहा है बहुत वीक था यार। पुशिंग पेल दिया एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे अभी। I only have few bullets. ले लो Plating up. Seriously, give me some ammo, man. Give me some AR, someone, please. ले लो ये ले SMG marked. ये ले और गिराई है मैंने। ये आ गया तुम पे। बंदा गया एक शख्स पीछे की तरफ कूदा है बस। प्लेट्स भाई we need to buy a plate box and I need to buy a fucking vest. ये टीम वाइब नहीं मिलाता गाइस। मैं उधर पीछे की तरफ वेस्ट ही नहीं मिलके दे रही बहन चोद। घर में होना वही वाला कूद के निकला था, पता नहीं दूसरा है कि नहीं इसमें। Please tell me there's a vest in this. Vest नहीं है। ये एसएमजी भी चाहिए। ये भी खरीद लिया मैंने एक। पॉप कर दे अभी ओके कहां पॉप आई डोंट थिंक पुश करते हैं लेट्स गो एसएमजी नहीं है बाकी आई एम गुड। कौन से क्या बोला और किसी ने? एसएमजी नहीं है मेरे पास, अदरवाइज आई एम गुड। एसएमजी मेरे पास पूरा है, आई कैन ड्रॉप यू। नहीं एमो नहीं, गन नहीं है मेरे को। एक वेस्ट चाहिए भाई, इतने बंदे हमने मारे हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स रोहन। लेफ्ट में है और एक बंदा गिर भी रहा है। खेल दिया मेरे को। कहां से पड़ी? वहीं से फायर स्टेशन की तरफ। बाइस्टेशन के पास left is broken, he's one shot, he's down. عندي هنا يسار اول ما اطلع يسار بيكون هذا अरे राइट को शूटिंग नहीं यार, इसके नीचे है। अरे शिट पास में भी है। अबे बहनचोद मैं कवर में नहीं आ पाया। 2 बंदे मैंने डाउन करे। थर्ड पार्टी हुए हैं हम। काम है ना। सेंटर में उनके बेस में। ठीक है दोनों। नहीं यार मेरे को तेल दिया। एक रेड है, ले जा यार। नहीं अब तो मुश्किल है। दोनों तरफ से आ गए, दोनों तरफ से आ गए। क्या देख रहे हो? मुझको भाई आ गया। मैं नीचे ही हूँ। ग्रेनेड आया यहाँ पे। मेरे इसको डैमेज करा है मैंने, बट ही किल्ड मी विद मेले। यहाँ यहीं पे दोनों यहीं पे हैं। तो डेड बंदो है वो। ऊपर चढ़ रहे दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं। भाई टू टफ। अब वो भी समझदार थे, they were like split up. They hit us hard that
time, but we will settle the score. एक हमारे सर्वर ट्राई करता हूँ। किसके बताओ? पोली हो रहा था उसका, ठीक चलता है। कर दो सेट। तो कौन है? क्रेडेक्स। मैं स्टार्ट कर दो। तेरे को बना दिया? ओके। Check weapons and gear. We're holding for deployment. Enemy dropping into the window. Enough training. Now we face the enemy for real. Truck. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Got it. Brock. Oh shit. Okay. Let's go again. You're clear to engage all targets. मेरे पीछे बहुत बंदे देख रहे हो अभी। मेरे पीछे पंप की साइड पे। चलो I can fight. So I'm there. Enemy dropping. थोड़ा पीछे। Armor pouch marked. उठा ले Yeah, you're good. कौन पिल रहा है? इसको वीक किया है। मैं पिल रहा हूँ। वन शॉट है अंदर। अरे यार
Move to site to urge redeployment. तो यहाँ से भी 2 लोग आ रहे हैं, वो 2 लोग आ गए। जब तक आ रहे Soldiers, your pathetic lives belong to me now. There is only one way to win them. Kill the jailer. That was fun, guys. Kill the jailer, kill the jailer, kill the jailer. Don't fight, don't fight. Kill the jailer. कोई नहीं सुनेगा भाई। Don't fight, kill the jailer, kill the jailer. Don't fight. Don't fight. वो सड़ी के क्या कर रहा है करने को? छोड़ना छोड़ेगा तेरे को। He's a pure Canadian man. Like they know about all these stereotypes about Canadian people. Only fits that shit. अपने एरिया में चलते हैं चलो। Let's go on to jail. कहाँ जा रहा है? Don't do this यार। हवा से तो कोई दिख नहीं रहा। Safe cracker is probably a good idea. इतने पैसे तो हो जाएंगे कि एक बंदा आ जाएगा। अरे बढ़िया। उसी टीम ने कट कर दिया वो। अरे तू है ही इतना स्टड बेंच, जो सब डरते हैं तेरे से। We located high-value equipment in enemy containers. Move in and secure that equipment. कोई गन मिले ढंग की तो चले। ये जगह नेचुरल बड़ा है वैसे बिल्कुल। वो बढ़िया। I'll take that. No, dude, this dude. मेरा teammate भी तो noob है, fuck. 2v1 भी नहीं जीत सकता. अभी ये कैश कर दे बाप। कौन सा है? बाय बाय तो बहुत दूर है ना पहले। चलो ये कॉप कर दूँ। आ दिया। मैं उस पे जा रहा हूँ। सेफ पे। बहुत ही स्लो चल रहा है। अकेला मत जा, bro. I have a feeling there might be one safe remaining. इन साथ में चलते हैं। वैसे पैसे तो हो गए हैं हमारे पास। We just need to find a buy. खत्म तो कर गए। ये वाला इसमें probably best होगा। You serious? जब play ते मर जाओगे। पैसे नहीं चलते, यहाँ चलते हैं। Yeah, that sounds good, man. That sounds. रास्ते में चेंज भी कर लेंगे। ये एरन साइन कर रहा है। Actually भी स्टॉप कर दिया। You've secured all contents. Contract चलो 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 हो गया लूट। कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये वाला बाइक यूज करो। Do this. वो तो बहुत ही डेंजरस है। चौराहे पे हो। कोई भी ले लो। नहीं वो वाला इतना डेंजरस नहीं है। तू ये सोच रहा है ये वाला हो जाएगा। अरे रुको। यहाँ मत रुको ना। भाई तो क्लियर लग रहा है। यहाँ बंदा है। एक और ये भी है। ओह देखो यहाँ। ये तो फुल फ्रॉड है। वो बाय अवॉइड कर ले, लेफ्ट वाले पे ले ले सीधा। हाँ लेफ्ट वाला ही ले ले। वो दूर तक क्लियर लग रहा है। Clear है। Let's go for it. Drop me some cash and some. इनको समझ में आ गया अब। आ रहा है। प्रेसिजन मार दी। प्रेसिजन आ रही है। किस डायरेक्शन से? जहाँ पे ये भी बंदे देखे थे मेरे को।
मैंने पैसे और सैचल डाले हुए यहाँ पे भाई तो रुक जा मैं आ रहा हूँ। ध्यान से बाहर देखिए। तो तक मैंने अपनी दोनों को बहुत डैमेज दिया वहाँ पे। फॉरगॉट अबाउट दैट। कवर है यहाँ पे भी। एक यूएवी पॉप कर रहा हूँ। आ गया पुश आ गया हम पुश हो रहे हैं पीछे से। निकल रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ। निकल रहा है ओके देख ले। हाँ ये हम भी चाह रहे भाई। हाँ बट मेरे पास गन नहीं है जस्ट रियलाइज्ड अपनी वाली। बस 40 राउंड्स है दैट्स ऑल। वो न अच्छा मेरे पास कोई बॉक्स तो पड़ा है आर्मर बॉक्स पड़ा है मेरे पास। कोई कैश देना यार गन खरीदने के लिए। बाय पे है पड़ी। ऊपर ब्रिज के ऊपर उसको गिरा दिया फिनिश दैट किल। बहुत पिस्ड हो। पास में कोई आ गया कोई तो है। मल्टीपल टाइम्स पड़ी है। किसी ने ब्लैक साइड भी पूरी कर दी वहाँ पे शायद। पास वाला किधर है भाई? मेरी तो रेंज ही नहीं है ऐसी। रेंज नहीं है वहां तक ब्रो। फिर क्या कौन सा लोडर यूज मतलब वो विजन की रेंज नहीं है। आई कुडंट सी द गाय। You've got gas inbound. Safe zone relocated. हर तरफ से पेल रहे हैं घर के अंदर। नहीं I can't shoot at them from here. I need to buy a weapon. बस पैसे पीछे है भाई। हाँ पुलिन पैसे दे। Cashier. Thanks. उठाना बहुत सही है। I'm forgetting them. I'm just wasting rounds on them. Knock भी नहीं हो रहे बेंच पे। बस पीछे बंदा आ गया सामने वाला। कहाँ पे? पुश आ गया। वो डाउन है। एक और ने भी राइट से। ओके नहीं यार सेफ हूँ। घर के अंदर आ रहा हूँ। बोलो ना इधर आ। किधर जा रहे तू? पॉसिबल ही नहीं है। ले जाना है ऊपर। पड़ी घर के अंदर आ जाओ गाइस। तो प्लेट अप करके आ रहा हूँ। प्लेट बंद कर रहा है अंदर। We need to get the fuck out of here. हम क्या कर रहे हैं? इसके दूसरे इसने मेरे को मारा तो वो कहाँ गया? के पास तीन गैस मास्क है। टू डैश इसका बैग लूट लो। एक छोड़ देना मेरे लिए भी। हाँ मतलब कोई मल्टीपल क्यों नहीं लेगा? सारे जा चुके हैं। एक ही मेरे पास दो है एक्चुअली। ये चाहिए तो लेना। भूसड़ी के यहाँ वाला बंदे को मार दिया था। कहाँ पे है? दे ब्रो। क्लियर थे क्या? यू थिंक और बंदे होंगे वहाँ पे? वहाँ से आए थे ये दोनों बंदे। मेरे को जिसने गिराया था उसको क्या हुआ था? हाँ बोल ना। गैस मास्क। क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ दे रहा है। लोडआउट गिरा था ब्रो। मेरे को कौन सी लोडआउट? ये रहा लोडआउट गिरा हुआ है। जाना लोडआउट पे। व्हाट डू यू थिंक? चलो हाँ चलो वो लेके फिर उसके बाद सेफ खेलते हैं थोड़ा। लैंड किया था बंदा यहीं पे। गो टू विक्ट्री। स्मोक्स है किसी के पास? हार्ट बीट है मेरे पास जो काम ही नहीं करती। मेरे पास एक है। लोड आउट पे डाल दे। लोड आउट कहाँ है? हिल के क्रॉस है। टेंशन दिख ही नहीं रहा।
वो तो एक ही चाहिए। आरपीके किसने ले लिया? आई थिंक मेरे पास तो मेरी है। हाँ मेरे पास मेरी है। एक आरपीके यहाँ पड़ी हुई है। तो शायद मेरी है। एक सेकंड, नहीं ये तो मेरी है। मैंने गोस्टेड लिया है। should be a little easier. Enemy helo marked. Copy. Enemy helo marked. बस अब हमें सेफ बैठना है, कैंप करना है हमें। बहुत अभी सेंटर में यहाँ जाना है, वो अलग घर जाना है। So that one? चलो यार ये वाला थोड़ा हाई है। आई लाइक दिस। That's कुछ चलेगा। This one is सामने फाइटिंग हो रही है इधर। ये थर्ड पार्टी में रहते हैं। Not too far away. Move it. Push down right here. that down है। broken है वो। Damaged है, उसका घर के अंदर भी। I see him, but डाउन हो गया, डाउन कर ले। पुश करते उनको। Friendly airstrike in the AO. प्रिसीजन करिए भाई। बहुत बढ़िया। मेरे को राइट से हाईलाइट आया। कोई नहीं ये क्या मेरा बुलेट नहीं लगा ब्रो। कम बिच। This is the second time it's happening। मेरे गन से बुलेट नहीं जा रहा। After parachute। वॉर्गीज छत पे। वॉर्गीज मत एंगेज कर। तेरे नीचे लोग दिख रहे हैं मेरे को अभी भी। Damn. So ब्रेक करे, ब्रेक करे। through a fucking wall. एक ब्रेक करे बट एक और है, वो नहीं ब्रेक हुआ। Oh, that is. Wait, no. दो ब्रेक करे, दो ब्रेक करे हैं। How did you even get on the roof? वो तो मार दिए। ये तो तू है। अरे नहीं, एक और भी दिखा मेरे को। हाँ ऐसा इसी काम बाथरूम में बैठा था। फक मेरे पास कैश भी नहीं है यार। मुंह स्पॉटेड कर ले। वो जेल ब्रेक। जेल ब्रेक क्या बात है। वहाँ पे एक 16 ही बचा है। I swear bro, I've never like this is the first time probably in my life jailbreak has ever been good. गाड़ी जा रही है। गाड़ी आ रही है। वो लोड आउट पे गिरेंगे कोहली तो वो पहले वाले घर पे मूव कर। पहले वो वाले घर पे भी मूव कर। वो वाला लोड आउट उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। You're right. We can't take that. You're absolutely right. और लोड आउट तुम्हें नहीं बताऊंगी, मेरे को कोई आइडिया यहाँ पे है और यहाँ पे है। मार्शलैंड्स जाना है। चलो वहाँ पे बुलेट तो है। ऐसा मूव करना कि मैं भी पहुंच सकूं वहाँ पे। हाँ तेरे पास है। कौन बंदा है? शूट हो रहा है मार्शलैंड्स पे, कोई शूट कर रहा है। इससे आगे है वो, लोड आउट के आगे की तरफ है। मैं देखता हूँ, मेरे को मार दिया तो फिर मत आना। बंदा है, लेजर दिख रही है मेरे को। मैंने तो ले लिया है। तुम्हें आना सकते हो। बंदे हैं मेरे सामने। अटक गया मैं। 60 राउंड्स है। ये हमारी तरफ भी आ रहे हैं। तेरे पीछे गए। गाड़ी लेके जा रहे हैं। ट्रक मेरे राइट। बाई पे गया वो। बाई पे उतर गया वो। चलो ना। पता नहीं कुछ बाय कर रहा है उसे। चुपचाप पे देखते हैं। अरे बाय। डाउन डाउन है।
सेल्फ होगा साले के पास। बहुत बढ़िया। इनके पास एमो गाड़ी फुटेगा मिनिशन है इसके पास। ऐसे गधों की तरह खड़े हैं हम। अबे भैंचो मेरी गन्स गोलियां क्यों गिरे जा रही हैं? साले ले जो तुम लोग। एमो बॉक्स नहीं है यहाँ पे। मिनिशन बॉक्स है ना इसमें? मिनिशन बॉक्स किसी के पास था अभी, हमारे में से किसी के पास है। Do you guys want munitions box right now? गिरा दे। मतलब I have zero ammo, या ammo दे दो मेरे को ना। ये ले मैंने munitions box। Moving here. एक्स्ट्रा कैश होगा तो गिराना प्लीज। Oh, Wargis, what an asshole, man. ये ले भाई। हाँ Wargis से मेरी भी गन्स वो उठाई है बुलेट्स, इसीलिए मेरी खत्म हुई है। मेरी भी तो उठा ली किसी ने। भाई मैंने 200 गोलियां गिराई, मेरे को वापस करो मेरी जिसने उठाई। एक्स्ट्रा कैश मेरे को बस देख लेना, मेरे पास सिर्फ 2 गोलियां हैं, उतना ही सपोर्ट दूंगा। I dropped 180, 280 sorry and I got fucking 90 back. किसने उठाई मैं बता रहा हूँ। I'm dead. तो अच्छा अब इसकी बॉडी से ले ले। भाई आर्ग्यू करते रह गए भैंचो। अच्छा मस्ती करते रहे, प्रेशन मार दिया। बाहर ब्रो तो साथ चला ना कुछ। कर में कोई है Actually नहीं ना। तेरी आवाज आ रही है? मैं बहुत तेज से कैश मांग रहा था। हाँ आ रही है बट मेरे पास तो कैश था ही नहीं। कैश कैसे क्या करेगा? भाई पे बंदा बैठा। मैं पहले मांग रहा था, मैं पूछ रहा। गाड़ी आ रही है। एक ब्रेकर है, एक डाउन है। चलना लौड़े। गाड़ी पीछे से आ रही है, उसको पे लो। बहुत वीक है। मोटर आ गया। नीचे से आया मतलब। तो परेशान ऐसा एक सब मर दिया भाई। पत्थर ने मार दिया मेरे को। नीचे से बंदे आ रहे। पुरुष को तो लावारिस छोड़ दिया। मर जा, क्या कर रहा है बुलेट। तेरे लेफ्ट से भी बंदे ऊपर आ रहे हैं, तेरे पीछे से। हाँ इधर गई से, और राइट गए होंगे। क्या हुआ है? बढ़िया। सरप्राइज हो गया। ओ भाई नेड ये डाल रहा है, डैमेज इसको हो रहा है। वो पहले वाला नेड से मेरे को क्यों डैमेज हो गया? तेरे वो तो 1.5 डाला था बाद में।
इसको लॉबी चेंज करते हैं। बना दो। ओके किसको बनाऊँ? किसी को बना दे अब से। और इसको बना दिया। Time to practice. We will be deploying soon. Hostiles dropping into the area. Watch your side. Fire! इसकी तो गांड ही मार दी मैंने। Time to see what you have learned. क्या जाना तर्राक? बाउंटी में जाना है। Actually, proceed to the safe zone. बंदे तो आ रहे हैं मस्त, स्वेट भी लग रहे हैं तो आ गए। Eliminate all targets in the AO. Most wanted contract accepted. Prep for contact. Enemy soldier incoming. कुछ नहीं मिला मेरे को। तीनों लोग से गाड़ी नहीं है, पैसे नहीं मार दी मेरे को। मर गया मैं, कोई चांस नहीं है ब्रो, मर जाए। भी डाउन है एक बंदा इसका। क्या बात कर रहा है, ये कैसे मर गया वो? Surviving earns them redeployment. Your squad mate has failed. They are returning to base. تعال حط شو اسمه. पिटाई हुई। Most wanted contract failed. Your squad mate was KIA. Fight for your chance to redeploy. नवाब भी है साथ में।
return to base. Someone better buy fuel! It's on your side. We are sending you back to the front line. It's all up to you now. Man, छोड़ मेरे को जीना नहीं पेल दिया वे Your में squad mate was broken. They are no God. गोली मेरे साथ तो बहुत ग्राउंड हो रहा है भाई मैं अच्छा वाला अपने विनिंग पोजीशन में था Thought he was in the winning. उधर पे ही बंदे हैं लॉल हो गया जल्दी से हीलो ले रहे ना भाई हीलो के लिए आ रहा हो हीलो के लिए आ रहा हो फक हीलो के लिए आ रहा है गाड़ी ले ले भाग जाए दो बंदे हैं वहाँ पे किस्मत है वो Copy that. UAV online and orbiting the AO. Fuck man. You lost that one, but you will come back stronger next time. Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on your attack map. What is the looter? आप एज कौन सी गाने यार Warm up while you can. We will deploy soon.
स्वेट लग रहा है। Hostile dropping into the area. Watch the skies. Practice is over. The real fight begins now. चलो कर रहा चलो। Set a drop point for your squad, soldier. Disregard that. Gas is approaching your position. Cancel that. Pushing किया है। Disregard that. Cancel that. Disregard that. कोई भूख लग रही है। Bird, mark. जीरेन ने रिप्लाई किया वो तो। मुंह में ले ले बोल रहा है जीरेन। तो हफीज बोर्ड उतरा उसकी माँ का बोल रहा है। उसकी माँ की बोर्ड। चलो भाई हफीज बोर्ड। उसकी ये अजीब बंदा। बहुत बंदे आ रहे हैं। बहुत बंदे। मकावेली। एटलीस्ट 2 टीम्स। ये क्या हो गया? वापस वाला गेम शुरू होने से पहले खत्म हो गया। छोड़ देगा। नहीं हेलीकॉप्टर के लिए गया था रोहन ऑयल। बहुत बंदे हैं भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं एक्चुअली तेरे साथ आ रहा था, फिर मैंने देखा और कितने बंदे गिर रहे हैं, मैंने कहा छोड़ो। मेरे सामने 2 बंदे हैं। आ रहा हूँ अभी। Squad mates redeploying to the AO. I just needed a gulag this thing, bro. And get the gulag out of the way only. ताकि अगली बार मरने को ये दो तो अबे तुम लोग मर गए इसका बहन छुड़ा रहा हूँ मैं। Just hang on, you'll be okay. अच्छा वाह। Pura vida. Thanks for that. कोई बंदा लौड़े। ओह नो, देखा मैंने को, देखा। कवर में आ। मैं कवर में आ रहा हूँ। Broke me. एक सेकंड मैं फायर दे रहा हूँ, रुक। मैं इतनी कवर में आ सकता था। किधर है अभी? एक बिल्डिंग के ऊपर। इधर था पहले तो। Very more good player, man. Good player. अकेला बचा है वैसे इनकी टीम का। पीछे की तरफ गया और I see him, पीछे की तरफ गया, I see him. मार कर कहाँ पे? तो खेल दिया मेरे को। ब्रोकन है वो? How many guys got him and ब्रोकन है मेरे सामने इसके अंदर। कितना I see him. He's a good player, man. I'll give him that. भैंचोद इसने वेस्ट ले ली। मादरचोद ने मैंने मारा था। चारों किल तो मेरे दिख रहे हैं। ओह तूने मारा था। डैम डैमेज भी पूरा मैंने दिया था, पता नहीं क्यों लगा इसको। भाई डैमेज तो मैंने डेफिनेटली बहुत किया था। नहीं मेरे पहले वन शॉट बोला था, मुझे मारा था शायद तूने, ये क्या 2 नहीं मारी होगी। अच्छा कोई नहीं। ठीक है कोई नहीं। काउंटर तो है नहीं। सबसे ज्यादा डैमेज तो मैंने किया था। हाँ ऑब्वियसली तूने तो करा ही था। अब मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा हूँ, बस लास्ट बैकपैक भी है वो भी नहीं दे रहा हूँ मैं। सब मेरा 0 है भाई।
किसी को 5 मॉड्स वाली राल एमजी चाहिए तो गिरा रहा हूँ बाय पे। पैसे ही नहीं है मैं पूरा वो तो सारे मैंने लूट लिए ना, मेरे पे बहुत ज्यादा थे। You looted the stronghold building? नहीं, not the stronghold building, in general around the city. खुल गया क्या? गिरा सकता हूँ यहाँ पे। Your team made it to the safe zone. गिरा मैं ले लूँगा। I'll need a gun. I am not sure इंसानों वाला है कि बॉट वाला, हमारी तरफ ही आ रहा लग रहा है। जानवरों वाला? बॉट वाला। मोस्ट वाला कर रहा है। ये ले। अभी होगी। स्ट्रॉन्गहोल्ड कब एक्टिवेट होता है? एक्टिवेट हो गया, खत्म हो गया। एक्टिवेट हो गया। ओह राइट, ओके, आई सी इट नाउ। आगे क्या करा दूँगा? वन मिनट सर। ये क्या होता है? वो कुछ ओनी चान बोला मैं, उसने ओनी चान बोला, मैंने बोला यहाँ में थे। पता क्या मतलब है? ऐसा ही कुछ जापानी मतलब नहीं होता, बहुत बड़ी है। LTV कुछ है क्या? JLTV मार्क्ड। मैं तो कहता है कि LTV कब कैप्चर कर लेते हैं, उससे गेम काफी आसान होता है। सामने टक तो जा रहा हूँ। Have an extra self revive. Marksman, so I need sniper. मेरा सर्वर अटक रहा है। अभी तो नहीं, मैं काफी टाइम बाद 0 पकड़ लो सारा। मेरा 190 पिंग आ रहा है। पीछे बहुत गाड़ी आई है इस बिल्डिंग के नीचे। इस बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया मैं तेरे पास। गाड़ी आई थी, पता नहीं कहाँ गई। मैं ट्रक लेके ना LTV ले जाता हूँ। लाइक दिस LTV चलते ही है। ये नहीं, वो सिटी के बीच में तो नहीं है ना, मौत ही होती है। रुको, हमें बैठने के साथ में चलते हैं। मैं नहीं लेके आता हूँ। तो पेट्रोल पंप मार करो एकदम सुनसान एरिया में, उसको होल्ड करें। भाई कितनी हैमर्स होती हैं अब? Do you want a self revive? No, I have one already. दिन का कॉम्स नहीं आ रहा है। हाँ, पुलिस कॉम्स में कभी नहीं आ रहा। 2 रख ले। मैं सर्च कर रहा था चिकन पैटीज। हाँ मंगाया था। आपका खाना खा लिया? हाँ हो गया मेरा चिकन पैटीज। हम सिटी में क्यों आ गए हैं? चिकन भी खाया मैंने। मैं पुलिस को फॉलो करते आया हूँ।
लोड़ा उठा रहा है। शॉट कर रहा है। मार कर देना एक। ये मार कर देता तो हूँ। पास वाला मार किया। पास वाला इज एक्चुअली सेफ बट ये वाला ज्यादा सेफ होगा। हाँ बकवास भी है। सेकंड वाले पे चलते हैं वो काफी सेफ होगा। सेकंड वाले पे एयर स्ट्राइक हो रहा है। सेकंड वाला कौन सा? 4 मार्क दिख रहे हैं मेरे को। छोड़ना रहेगा। और पहले वाले पास वाले छोड़ दे, दूर वाले पे चल। मार कर बाकी वाले हटा दो ना। 4 लगाया। ये वाले पे। ये तेरा है। इसके पीछे वाले पे। उसके पीछे वाला। अरे यहाँ पे तो एक ही बंदा है वैसे। एक ही बंदा है, तो लेना। एक ही बंदा रोड के सामने भाग रहा है। तुम ले लोड आउट लो, ये भी क्लियर है। इसमें फेल किया था। तो लिया ही यार। भाई गाड़ी के नीचे से निकल गया। अनबिलीवेबल। क्या क्लियर था? पास में भी लोग आ गए। पूरा खुश हो गया। यूए में तो कोई नहीं जा रहा हमारा। अगले पे चलो भेंचोद में। आई नो मतलब भाई यूए में कुछ नहीं दिख रहा। तुम भी तो कुछ चुपचाप उतर गया। ये तो गलत बात है भाई। भाई गाड़ी से तुम्हारी नहीं हो रही। तेरे सामने एक बंदा। एक ऊपर है। तेरे को पुश कर रहे दूसरी साइड से। Squad mates lost your life. Now they return to base. You'll have to fight to earn redeployment. To escape, die, and you never time to kill. एक राइट आया। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर एक बंदा है। इसने मुझे मार दिया बाप। मैंने फिनिशिंग दी है उसे गुलाग में। वेरी गुड। दूसरा आया कहाँ? अरे ऊपर है इफ यू आर स्टिल लाइव। उसको डैमेज भी करे ब्रेक करा बस। बहुत बढ़िया। मैंने आज तक पहले किसी को फिनिशिंग नहीं दी गुलाग में। दैट वाज फन। क्या करे। इतना बड़ा मैप है ब्रो, बहुत कुछ कर सकते हो। चलो लोड आउट। पहले प्लान करा था वहीं चलते हैं। वही वाला सेफ होगा मेरे हिसाब से। रेकमेंड पहले गाड़ी ले लो फिर। गाड़ी इज आल्सो गुड आइडिया। I'm going for it. मैं भी उस पे आता हूँ, देखते हैं। तो एक को तो मिली जाएगी। दरवाजे खुले हुए हैं यहाँ पे। Damn boy! मेरी तो हालत ही खराब कर दी उन्होंने।
अबे कहाँ आ गया मैं? यहाँ भी बाकी सब मैं झील में हूँ। गाड़ी चल गई। इधर दरवाजा है। Hostile UAV in the area. आ गई मौत की गुहार। Made it to the safe zone. ओह फक, मेरे सामने दो बंदे गिरे हैं गूगल से। मल्टीपल गाड़ियां भी हैं। आई एम रनिंग अवे। भाई बाय। जाया में है, बाकी सब तो बहुत दूर दूर है। सिर्फ जाया वाला ही बचेगा तुम लोग। आया तो सबसे पास जाया ही है। जाया पे ड्रोन भी चल रहा है मेरे पास तो। तूने लोड ले लिया है? ये वाला ट्राई। हाँ लोड आउट पे ले लिया। जोन की माल हो जाएगा थोड़ी देर में। मैंने नहीं लिया अभी तक। मैं जिस लोड आउट पे जाने की कोशिश करता हूँ कुछ इशू हो जाता है। कौन सा रिवाइव है ना? ये वाला ट्राई करो, जोन की माल हो जाएगा। वहीं से तो पिटपुटा के आया हूँ। ये वाला है दिस वन साइड सिटी। अच्छा वही वाला नहीं कोई नहीं है। कहाँ तक आ गए? गाड़ी लेके फिर आएंगे। इनको पेलो, इनको पेलो। लोड आउट नहीं है। कितना कहाँ रहा है? बैठा हूँ मैं तो अंदर हूँ। क्या चल रहा है ये? नहीं यार भाई साहब बहुत बुरी पढ़ाई करी है एचजीसीसी में। मुझे लगा ही रहेगा ऐसे हंटिंग की जाती है राउंड में। आकाश ये सब स्वेट है भाई इंडियन जो टीम है। सर्वर स्विच कर रहा हूं। सुना दिया करो इसको। लगा दे कोडी। ओके मैं नहीं हूँ ब्रो। यू आर नॉट द पार्टी लीडर। बैक करके दोबारा। ओके ये सब भी करना होता है। Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Check your gear and weapons. We go soon.
soldier incoming. Did you give a finishing move, buddy? Moving. Not cool. Enemy dropping into the AO. No way. Training is over. Time to see what you have learned. बताओ Battle Royale. सॉरी मैं भी आया. Avoid the gas. Get to the safe zone. ये तो मोशन में चला गया. हम क्या करें? सब कूद गए. और ये यहाँ पर हो गया. हाँ वहाँ पर बंदे आ रहे हैं बंदे आ रहे हैं ऐसे या बंदे आ रहे हैं. Oh fuck. मैं तो पहुंच गया. Eliminate all targets in the AO. Good on you. हर जगह बंदे हैं ब्रो. जितने कैशेस होते हैं सब पे बंदे हैं. भाई मैंने उसके मुंह पे मिसाइल मारी वो उससे भी नहीं मरा फिर. और मेरे को मिसाइल दी थी जो इसमें कैश Squad में. mate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. नहीं यार. Soldiers, 4 of you are in my arena. The last 2 standing will leave it. Kill your way back to that. He's just sitting up there in the corner. Weak. कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है. ऐसा है. My champion. He'll make this Squad mate is redeploying. Stand by. बहुत बढ़िया. बैक पिचेस किधर जाना? अरे अभी तो मैं मोस्ट वांटेड कॉन्ट्रैक्ट के पास आके पीछे से बंदे में. मोस्ट वांटेड. ओके नेवर माइंड. Your squad mate has entered the gulag. इधर चलते हैं. पेट्रोल पंप है यहाँ. इधर जा रहा हूँ. Oh no. I don't know कहाँ जा. इतना बड़ा मैप है तो थोड़ा ले गया यार. तेरे पास में एक मोस्ट वांटेड है. Be advised, Intel has located multiple strongholds. Strongholds are open. आसपास कोई नहीं है. Gas is moving.
squad mate has been marked most wanted. Keep him covered. Enemy UAV. क्या हो गया? बॉम्ब्स भी आ रहे हैं। ये बुलेट पुलिंग की कोई बॉम्ब भाई हमारे सर्वर पे कॉम को बॉक्सेस खोल ब्रो बस ब्रो बढ़िया ऐसे तो बहुत हो गए अपॉर्चुनिटी जरूरत ही बड़ी इस बार पे आता है मैं बाकू के पास जा रहा हूँ होने वाला है तो कंप्लीट वहीं पे बैठ दो बाय सबको यूज करना पड़ेगा जस्ट होल्ड दैट it's not as easy as to say man if there are people pushing towards me I won't be able to do that I need to yeah that is true उनको तो बहुत दूर स्पॉन किया है You kept your squad mate protected. Contract complete. गन खरीद रहा हूँ मेरे को भी चाहिए What you guys? कल क्या हुआ था अब तो बहुत डर लगता है Got gas inbound. Safe zone relocated. Dash मिला मेरे पास ये लो Moving here. थैंक यू वो सेल्फ रिवाइव था अंदर आ सकते हैं we can move यहाँ पे सैचल पड़ा हुआ एक Armored satchel here.
ये अपने पैसे देगा। You've got a loadout drop in. लोड आ रहा है, लोड आ रहा है। कहाँ पे? लोड पे चलते। Let's go fast man, let's go fast। क्या मेरे पास फिल्म के लिए एक वेस्ट है। तो ड्रोन चल रहा है वैसे। Enemy recon drone mark. Move it. Moving here. You're losing ground. फाइटिंग भी हो रही है उधर। Your team has entered the safe zone. दिख तो नहीं रहा कोई नीचे। होने तो चाहिए, यहाँ कहीं है। कौन ऑयल से मार रहा है? The sector's hot. भाई मेरी गन प्लीज। Don't worry, I got you. And this is my gun. बंदा पीछे लैंड कर रहा है, बंदा पीछे लैंड कर रहा है। लाइव मार। Shots on me after. पीछे। ओके। ये बाड़े एक और है इसके पीछे। तीन भाई बेचारा। तूने वो दे दिया। क्या चाहिए? ये ले। Destroy the helo man. ये ले। और बंदे होने चाहिए आसपास। ये ओपन में। एमो चाहिए। एक गोली लगी मेरे को। भाई एक गोली नहीं लगी। Broken. तुक्के से भी नहीं लगी। पेट्रोल पंप में आ रहा हूँ। मेरे को भी लगी। गाड़ी आ रही है। अपने गाड़ी जा रही है सामने से। वो पेट्रोल पंप में आएगा। नहीं गाड़ी वो बहुत माल था। कैसल पड़ा है। मिनिशन से भी गिरा रहा हूँ। एलटी भी फट गई थी क्या फट गई थी? ये एलटी में गया था ना। दो सेमटेक्स मारा था। that's how फट गई थी। Gas is inbound. Marking new safe zone. Smoke grenade here. Let's wait for the next zone. Putting you all on right, sir.
उनको यहीं पर ही आना है रोटेट। आएगा वर्गीस। कनेक्ट हो जाएगा। नहीं हिलता रहता हूँ बीच बीच में। तो फेसिंग वॉल खड़ा है। मैं किचन में गया था। आ गया वापस। चल पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। टैप टैप कौन कर रहा है? मैं और आरपीसी के मैं दूर वाले टावर वाले को मार रहा था। को बीम कर। टावर वाला भी कह रहा हूँ कौन चूती है बच्चों। पूरी एक क्लिप लगा दी मैंने। Land that bitch, man. Land that. Get out of my skies. यहाँ बंदे थे ना तुम बता रहे थे। फायर चल रही थी। बुलेट बोल रहा था तो आई कैन। फायर तो डेफिनेटली चल रही थी। Probably rotated. गलफ्रेंड ले लो जिसके पास नहीं है। मार्कर। क्या क्या? ये कौन है? ये कौन है? बीच में क्रैश क्रैश। कूद गए। नहीं मर गया। छोड़ दो। अरे लाश पड़ी हुई है। वन इज ग्रेट। कंफर्म मिला क्या वर्गीस? हाँ वो बता रहा मर गया वो। हाईलाइट आ रहा है। हेडशॉट पड़ा है तुम्हारे लिए। रखो बेंचो मेरे पास जगह नहीं है। तो देख के बैठा था अभी भी लूट रहा है बुलेट। तुम देख के बैठे हैं। All four of them. जोन टैग किया उसको। चल दिया भाई जोन ने। एनी व्हीकल पूरा लेफ्ट से चलो। कोई गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी राइट से चलते हैं। लेफ्ट चलते हैं तो हाँ वैसे लेफ्ट से चलते हैं। थिंक रात चलते हैं। बंदा लैंड कर रहा हमारे ऊपर। हमारे ऊपर ये तो भाई वैसे ही भाई ये स्नाइप मार रहे हैं। राइट ही जाओ। चल जल्दी रोटेट करना पड़ेगा। जोन बहुत पास है। Have smokes for days. One guy randomly. बंदा है पास में मेरे। रॉक शॉट आई। पास से मार रहे हैं। कोई तो है पास में। राइट टॉप पे बंदा है यार। राइट टॉप पे कहाँ पे? देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में स्नाइपर है वो नॉट राइट टॉप। इस ऑन सैंड ड्यून्स के पास है। ओके गुड फॉर्म। तो अटैक किया है। तो बहुत दिक्कत होने वाली है अभी। दिखा ये रहा। ब्रोकन है। Throwing smoke.
ट्रेजन मार दी थोड़ा ही नहीं को मैं पिल गया किसको लीडर बनाऊं? किसी को बनाऊंगा मल्टी खेलना है पॉइंट तो है बना दिया अभी तो जो मर्जी यार खेल लो बस गन यूज कर रहा है ब्रो पूछो कौन सा गन यूज कर रहे हो मैं तो आरपीके चला रहा हूँ मैं तो रैप पीएच Check weapons and gear. We're holding for deployment. Watch the skies. A blessable accent. Yo Genji. Bet. Moving here. Genji को मारने वाले गेम में. Warm up is over. Stand by for deployment to the war zone. Cara, né? कहाँ जा रहे हैं? Terrak, terrak. Gas is closing on your position. Suggest you get moving.
भयानक आत्मा आया, भयानक आत्मा। कहाँ जा रहा है? मैं वहाँ जा रहा हूँ। Confirm. Wherever this dude is going, I'm going that. तो देखिए आ रहे लग रहा है। नंबर 2 गए इससे। कौन? मैं एक के साथ हो रहा हूँ। लैंड ही नहीं कर रहा। ये बंदा चूतिया लैंड ही नहीं कर रहा। तू कहाँ जा रहा है? हेलीकॉप्टर। Enemy soldier incoming. لا 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 مش عندي في شيء مسكر. मेरे पे ही है क्या? तेरे पे लैंड किया मैंने। Where are your girlfriends? Where are your girlfriends? भाई थोड़ा कम मार्क करोगे? एक गर्लफ्रेंड लैंड के अंदर छत के ऊपर से, छत के ऊपर एक गर्लफ्रेंड। और ये वो पिस्टल लेके बैठा है। लेफ्ट से पड़ा। 2 टीमें आ गई। रोक ना ऊपर। और वो खा गया। करता हूँ मोस्ट वांटेड। इनको कोई हाथ डाल कर सकता है? एक और बच्चा है इनका हमारी बिल्डिंग में। किसी और ने मार दिया। यहाँ से आ रहे हो? एक तो उन्होंने मार दिया। भागे उस तरफ को। गुलाब में 26 लोग हैं बेंचो तो भी। I've never seen that before. गुलाब में कब पहुंचा? नहीं मैं नहीं, मैं वैसे ही देख रहा हूँ। 30 लोग। बेंचो। एमो नहीं है मेरे पास। Armor pouch marked. बाकी बंदे किधर है? मेरे को I'm not able to spot them. उस तरफ को भागे। ये कितनी देर में खुलेगा? खुलेगा की गारंटी नहीं है। मतलब पैसे मिलेंगे की गारंटी नहीं है। अनलॉक तो हो गई होगा शायद। मैं अभी 10 सेकंड्स में 10 सेकंड्स में अनलॉक होगा ब्रो। ये रहे वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है। लेफ्ट गए वो। वाको वेस्ट उठा लेगा। उन पे क्लस्टर भी मार दिया किसी ने। थैंक्स ब्रो। कोई और स्क्वाड होगा। I'm just waiting for the shit to open. Targets are marked under attack. मिलेगा ब्रो। Not a लास्ट के strong 2 टाइम मेरे को कुछ नहीं। यूएवी मिल गया मेरे को। पॉप कर दे। कर दी पॉप। पुश करना पड़े। लेफ्ट में 2 बंदे हैं, उनको पुश करना है। ये इसके अंदर रहेगा। चल आगे। शायद हमारी तरफ है। बस ये आराम नहीं है। राइट में 2 बंदे हैं। राइट में 4 बंदे हैं। राइट में पूरा स्क्वाड है। राइट में पूरा स्क्वाड है। माय बैड। एक को गिरा दिया। देखा मोटर मार दिया इसने मेरे को। भाग रहा है वो, भाग रहा है। यूएवी एक और है मेरे पास, चाहिए हो तो बता देना। चला आता है। क्या था? वो हेलीकॉप्टर लेके भाग गया। चला ले। वो खत्म हो गई मेरी। साइड से पकड़। इनको मारना पड़ेगा। हम की तरफ हमारे साइड में मोस्ट वांटेड है। अच्छा वो ऊपर हेलीकॉप्टर में हो तो मैं ARM नहीं। मैं ARM नहीं तो मैं फाइट लेता। ले चलो ये तो उन पे पुश कर गए लोग। वाको राइट से मैं सेल्फ रिवाइव कर रहा था, तेल दिया मेरे को। पास में होना चाहिए ब्रो। ആശിക് നിന്ന് പേടിക്കണ്ട. ഓ മലയാളിയാണോ ബ്രോ? ബാക്കിലോട്ട്. ആ മലയാളം
Sorry, we have to kill you. Oh, और बंदे होंगे ग्रुप लगता है तुम लोग मिले बंदे तो है लेकिन एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। सेंटर जा रहा हूँ। ओके मैं लेफ्ट साइड पे हूँ। वो एक बंदा तो उनके साइड पे ही बैठा हुआ है। मैं मर गया। लेफ्ट साइड में आया एक बंदा, जहां से कि जेलर निकलता है वहां पे एक ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। चल बाय चलते हैं। ये हेलीकॉप्टर तो लेके आया ना यहाँ। तेरे लेफ्ट में वेस्ट पड़ी हुई है आई थिंक इफ यू नीड। अच्छा नहीं नहीं है, आई थॉट थी वो रही है। अच्छा पास में ही है भाई एक्चुअली। Fuck man, cancel out नहीं हो रहा। Squad mate has failed. They are returning to. बाबा करने पैदल ही कर रहा हूँ अभी। Tossing smoke grenade. नहीं, that grabs too much attention man. बढ़िया, थैंक यू। एक्स्ट्रा पैसे गिरा दिया। Armor pouch marked. मेरे पास मरने के बाद $5,000-6,000 है। फिनिशंस भी है। We have an ammo box here. कैसे